Okay. Oh, by the way, हाँ मैंने game switch नहीं किया. By the way, yo my fatty buddies, how is it going? My name is FireEmperor and welcome back to another live stream of Genshin Impact. So how you guys are doing? Let me just switch the game because I'm on the wrong game. Maybe now it will show up in a few seconds. Yeah. There it is. Hi Baba Magijo, hi Guy Tonde Bau, then hi Cherry, hi Riaz, hi Naruto, hi Tushar, hi Alpha X, welcome to stream. Hi Evo Boy. हेलो भाई क्या हाल है? अरे मैं बस बढ़िया, तुम बताओ कैसे हो? आओ कितने दिनों बाद गेंशिन खेलेंगे. वैसे वी प्लेड ऑल द टाइम, वो बात अलग है. एंड मैंने ऑडियो निकाल दिया था इस गेम का, सो मुझे पहले ऑडियो ऑन करने दो बिकॉज हाई लेवल. पढ़ाई कर नूबड़े, पढ़ाई कर. वैसे जो भी लाइक 10th एंड 12th में बोर्ड्स है जिनके भी, ऑल द बेस्ट फॉर यू ऑल फॉर योर एग्जाम्स. माँ कसम आग लगा के आना पूरे पेपर में.
मतलब आंसर लिखोगे तब खुद की आग मत लगाओ, खुद को आग मत लगाओ लाइक। एंड हाँ यही बोलना था। हाय सूर्यांश बाय द वे वेलकम टू स्ट्रीम। हाय एफी, हाय रेनगो को वेलकम स्ट्रीम। बाय द वे बॉयज टेल मी, ये ऐसा ही सेटअप तुम लोग को क्लीन सेटअप अच्छा लगता है या यू नो ये वाला, ये जो अभी मैंने चालू किया है वो, कौन सा सही लगता है? एंड लेट मी जस्ट चेंज द थिंग। आई गेस नॉर्मली क्लीन ही सब सही लगता है, ऐसा मेरे को लगता है। क्लीन वाला ही सही लगता है ना, लाइक फॉर सम रीजन। लाइक वालों के इसमें भी बहुत अलग है ये है बकचोदी। एक सेकेंड ना बॉयज, आज कम्युनिकेशन का फाइनल प्रैक्टिकल था। क्लीन बट शॉर्ट्स के लिए चैट सही होती है। बाय द वे ये मैं रखूँ क्या? लेटेस्ट सब्सक्राइबर, देन लेटेस्ट मेंबर एंड लेटेस्ट सुपर चैट। वेबिमेंट किया नहीं रे, किया आई गेस मैंने सुबह किया था। ए वो हटा दे, वो किसी को चाहिए क्या बॉयज? आज कम्युनिकेशन का फाइनल प्रैक्टिकल था, कल सी लैंग्वेज का है। अरे ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। वैसे सबकी राय मांग रहा हूँ, सूर्यांश अकेला ही नहीं है, बाकी के लोग भी बोलो भाई। तुम लोग को ये चाहिए क्या लेटेस्ट सब्सक्राइबर या लेटेस्ट मेंबर? देन मैं ये चैट को और नीचे ले सकता हूँ सो दैट ये और क्लीन लगेगा। कुछ नहीं पड़ा। हाय द पेल राइडर वेलकम स्ट्रीम। नहीं चाहिए ना? तुम लोग बोल रहे हो कि इसको मत ही रखूं मैं, उससे ऐसे सिर्फ चैट रखूं या सिर्फ ये रखूं अलर्ट्स, या दोनों रखूं? ये तीनों ऐसे लगे। अगर चैट रखना है तो सिर्फ चैट बोलो, नहीं तो बोल दो कि अलर्ट नहीं, हाँ अलर्ट्स ही, या फिर दोनों। जो तुम्हारी मर्जी, हम लोग वैसे करेंगे। $59 हो गया तेरा? यप। अरे हाँ मैंने टाइटल अपडेट नहीं किया। हाय एफी, हाय माइनिंग बाय द वे, हाय एसे आल्सो वेलकम स्ट्रीम। अरे यार फक एक सेकंड यार, 59 हो गया है बॉय। एक सेकंड एंड बॉयज लाइक मारो वैसे स्ट्रीम को। यार 59 हुआ और मैंने लाइक 58 रखा है अभी तक, अपडेट ही नहीं किया मैंने। एक सेकंड बॉयज हिट करता हूँ उसको। प्रभात, हाय रेनगो को ऑल्सो वेलकम स्ट्रीम। अरे हाँ भाई मालूम है मुझे, मेरा लाइक बैटरी खत्म हो रहा है। आई डोंट गिव अ हिस्ट्री में जाके रियल लाइफ। पहले हैंगआउट से पहले आर्कॉन कर लेता हूँ। मेरा तो लास्ट स्ट्रीम में बोला था मेरी सुनता ही नहीं। तो तेरी आज लास्ट स्ट्रीम है? Hi Cutie, keep chat only. Okay, hi Akino, by the way, welcome stream. AR59 boys, AR59, let me just add it. Guys, make sure you like the stream if you haven't done it. 59. Ouch, it lagged. And now it's good. क्या कर रहा है भाई आज? नहीं पहले मैं टाइटल चेंज कर रहा हूँ, AR15 वो सब चेंजेस कर रहा हूँ। एंड आज शायद मैं आर्कॉन क्वेस्ट करूँगा बिकॉज बहुत पीछे हूँ मैं। तो आर्कॉन क्वेस्ट से पहले थोड़ा मैंने बोला वो AR का, मैं अच्छा ऑलरेडी बोला था पहले, पर तूने अरे नहीं मैंने तभी गूगल बंद किया था। अभी गूगल लाइक इन द एंड मैंने ऑन नहीं रखा था, इसके लिए मैंने वो चेंज नहीं किया। मैं बोला कि नेक्स्ट स्ट्रीम में करता हूँ मैं, बाद में मैं ही भूल गया कि मैं AR59 हो गया हूँ। 2.7 के कांग्रेस। अरे धन्यवाद भाई, तुम लोग की कृपा है सब। वैसे 2.1K पे गिव अवे होने वाला है ऑफ 2 वेलकन्स, सो मैं 2 वेलकन का गिव अवे करने वाला हूँ एट 2.1K। तो जितने जल्दी हो जाएंगे सही है। वैसे मुझे मालूम है म्यूजिक का आवाज़ थोड़ा लाउड है, तो आई विल फिक्स दैट अप। 2.1K 2.1K पैसे
2 12 कर नहीं 2 अच्छा अच्छा ये बोल रहे हो 2 हाँ 2 ही वेलकन भाई पैसे है हाँ 2 के लिए तो 2 वेलकन के लिए पैसे है ऑफ कोर्स तो 2 वेलकन का तो मैं कर ही सकता हूँ एटलीस्ट उतना हो जाएगा मुझसे उसके आगे का आगे देखते हैं बट ये वैसा ही है लाइक हम लोग वैसे ही करने वाले हैं हाँ ये तुम लोग को ये चाहिए था राइट मुझे देगा चैट को थोड़ा नीचे ले लूं चैट की पोजीशन कहाँ पे रखूं बॉयज वो भी बता दो मैं वैसे रखता हूँ तुम लोग को जैसा अच्छा लगे वैसा चैट को पूछे कि बिना कुछ होगा नहीं यहाँ पे तो चैट को ही पूछते हैं ले लो लेफ्ट कॉर्नर में मेडिसिन नॉट मीडिया को नॉट सो लॉन्ग नॉट छोटी तीर से ही बड़े निशाने लगते हैं लाइक अभी काम करेगा लेकिन बाद में बहुत सारे करेंगे हाँ अभी कम करेगा बाद में बहुत सारे हाँ वैसा ही तो है ये जोर से स्कीमें सबको मत बताओ यार सही है यहाँ पे सही है क्या बोलते हैं बॉयज कि मेरे लाइक सर के ऊपर रखो एक सेकंड ना उधर ठीक है अच्छा उधर ही ठीक है जहाँ पे है एक सेकंड और छोटा कर दो इसको चैट को कुछ कर भाई हाँ करता हूँ 2 मिनट दो मुझे सिर्फ चैट को और छोटा करूँ मैं थोड़ी देर में आ रहा थोड़ा सा रह गए हाँ श्योर आराम से कर भाई तो कोई ज़रूरत नहीं है मुझे फिलहाल डिस्प्ले कैप्चर में तुम लोग को 2 बार ये नहीं आ रहे हैं ना वैसे अरे हाँ अब सही है शायद से अलर्ट्स में जाके तो थोड़ा और छोटा करता हूँ बस यहाँ पे भी रख सकता हूँ मैं भाई यहाँ पे कैसा लगेगा यहाँ पे सही लग रहा है मेरे को लगता है यहाँ पे ही सही है इतना छोटा बस हो गया कुछ समझेगा लोगों को ये इतना साइज बस है बॉयज मैप पे करके देखो लेफ्ट में ही सही है अच्छा लेफ्ट में ही सही है यानी ये साइज बराबर है या और उसको छोटा करूं मैं फोन से देखता हूँ एक बार हाय साला ये है कौन भाई ये श्रेयस ही है शायद और छोटा मत करो अच्छा इतना बराबर है ओके ये श्रेयस अपनी आईडी से आबे मैं आज ज़्यादा देर तक स्ट्रीम पे नहीं रह पाऊँगा कल के लिए पढ़ना भी है अरे श्योर भाई देखो तुम लोग नहीं देखोगे ना स्ट्रीम तो भी चलेगा मुझे बिकॉज तुम लोग के एग्ज़ाम से मुझे मालूम है मेरी लाइक हाफ ऑफ माई पब्लिक आर लाइक 10th एंड बोर्ड्स में तो उनके बोर्ड्स चल रहे तो मैं समझ सकता हूँ मैं नहीं इतना ये करूँगा उस पर कि नहीं रहूँगा कि भाई तुम लोग नहीं आ रहे हो स्ट्रीम पे या चैट मेरी लाइक वॉचिंग कम हो गई है ऐसा कुछ नहीं है मेरी स्ट्रीम तो करते रहूँगा उसमें क्या है तुम लोग जब तुम्हें टाइम मिले तब तक देख लेना एज सिंपल एज दैट एग्जाम पे पहले ध्यान दो पहले एग्जाम कंप्लीट लाइक एग्जाम पे फोकस करो स्ट्रीम तो क्या तुम स्ट्रीम कभी भी देख सकते हो आते वक्त I lost internet connection 30 तक एग्जाम्स है
30 फरवरी या जैन? भाई साहब मेरा नेट आज बहुत खा रहा है, मुझे को नेट डूडू लग रहा है मेरा। अयो हाय घोष ब्रो, ये लेन बिल्ड हो गई फाइनली। 68 CR 188 CD 200 ER 4 पीस एम्बलम। अच्छा 30 जैन तक ही है, सही है सही है पर बाय द वे वो लेफ्ट कॉर्नर में तुम लोग को लग रहा है ना सही सही दिख रहा है ना? लेट मेरे को 1080p 60p पे देखने दो तो मैं तब मैं मानूं, बिकॉज ना बहुत अजीब लग रहा है बे वो मुझे। वो वोल्वेंडम में अंडरग्राउंड वाला ग्लिच अभी भी है या फिक्स हो गया? वो शायद से फिक्स हो गया। वो कैसा है? बस ये लेन आ जाए अब। 180 CD सही है। 68 CR इज नॉट दैट बैड। एंड HP कितना है? थोड़ा यहाँ पे रखता हूँ। आई डोंट नो व्हाई यहाँ पे ही सही लगता है थोड़ा। क्या लगता है तुम लोग को? अभी देखो वैसे हाँ थोड़ा स्ट्रीम लैग होगा बीच में, बिकॉज मेरा नेट थोड़ा ये है कमज़ोर है। 3 ऑनलाइन एंड 5 ऑफलाइन में वही है अभी तो, बस प्रैक्टिकल से। अरे हो जाएगा 30 के बाद तो फ्री हो रहा है, मतलब 30 के बाद फ्री हो रहा है तो मतलब चलेगा भाई भी, वहाँ भी चलेगा ना। अजीब नहीं लग रहा है ना तुम लोग को? सी कैसा है, मैं तुम लोग के पर्सपेक्टिव जानना चाहता हूँ ना कि मेरा। भाई तू कब से गेंशिन इम्पैक्ट खेल रहा है? अभी 2 साल हो जाएगा। 30 के बाद 24 आवर्स फ्री। अरे फॉर 8 डेज उसके बाद। हाय अक्षय, हाय एफी भाई, ये आपके थंबनेल वाले रेडन के आर्टवर्क का लिंक सेंड करो ना प्लीज़। अच्छा वो तुम्हें वो रेडन का ये चाहिए? वो मैं भेज देता हूँ, वो डाल देता हूँ मैं। मेरे पास अभी लिंक नहीं है उसका, मैंने ऐसा रैंडमली ये लिया था। देता हूँ मैं उसकी लिंक ही देता। हाँ लिंक ही देता हूँ। सेकेंड सेमेस्टर 8 फेब से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा ओके। हाँ तो मैं गाइस मैं तुम लोग का पर्सपेक्टिव जानना चाहता था कि लाइक तुम लोग को कैसा दिख रहा है एज अ व्यूवर, बिकॉज मुझे यहाँ से ऐसा OBS से समझ में नहीं आता। मेरे को सब ऐसा नॉर्मल छोटा ही दिखता है। मुझे लाइक फ़ोन से आके देखना पड़ता है, पर मैंने फ़ोन में देखा तो मुझे ना कुछ ये नहीं फ़र्क नहीं देखने को मिला। सो इसके लिए मैं तुम लोग को पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे कैसे लाइक तुम लोग को कैसे लाइक नीचे ही ठीक था या ऐसा ठीक है? तो हम लोग एक फिक्स कर लेते हैं। हेलो हाय सैनो। सेकेंड सेमेस्टर। अच्छा थंबनेल में बड़े दिख रहे हैं, छोटे नहीं। हाँ अरे नहीं थंबनेल का नहीं बोल रहा मैं। अरे मैं ये चैट का बोल रहा हूँ। ये चैट का पोजीशन देखो, यहाँ पे सही है या थोड़ा यहाँ पे सही है? ये आई गेस थोड़ा बड़ा ही सही था, बिकॉज अगर मैंने थोड़ा छोटा, हाँ ये सही है, ये साइज भी सही है। चैट सही पोजीशन में है, बस इसको यहाँ पे लेता हूँ मैं। हाँ ये सही है, यहाँ पे सही रहेगा। अपना अकाउंट देना हो गेंशिन एक्सप्लोशन के लिए तब दे सकते हो, 1 हफ्ते खुद खेलूँगा आपके वर्ल्ड में। अरे कहीं नहीं, क्या ठीक है अभी वाले जगह पे लेफ्ट कोने में ही सही है। ये सही है, ये फाइनल कर दूँ, ये पोजीशन फाइनल कर दूँ। थोड़ा मतलब इतना भी नहीं कि थोड़ा भी नीचे नहीं डाला है, एक नॉर्मल इस पे रखा है मैंने। ये फाइनल कर देते हैं, क्या बोलते बॉयज़? फाइनल कर दो। चलो ये हो गया। पानी कहाँ है? हाय बोरुटो। गाइस मेक श्योर यू लाइक द स्ट्रीम। अगर तुम लोगों ने नहीं किया है तो 20 लाइक पहुंचा दो, अगर हो जाए तो 20 के ऊपर तो जा ही सकते हो हम लोग। उतना भरोसा है तुम लोगों पे। fuck bro? Reduced to just standing around. How absurd. हाँ शाओ जाते हैं। Hi Pratyush, hi bro, I'm at 60 pulls, still no Raiden, have saved up 750 more premos till now. 750 हो गया ना? राम अरे राम भाई, अरे करना पुल कर, मेरे को दे दे तो मैं करता हूँ तेरे अकाउंट पे। तुम लोग में से कोई यूपीएससी नहीं दे रहा ना? थंबनेल का अनसेंसर्ड वर्जन है नहीं, अनसेंसर्ड नहीं है, वो अलग है रे, ये सारे अलग ही है। मैंने कुछ नहीं बनाया है। हाय बतख, वेलकम स्ट्रीम। मैंने ऐसे कुछ नहीं बनाया है सेंसर्ड अनसेंसर्ड वाले। ब्रो जहाँ चार्ट रख रहे हो वहाँ इन गेम भी शो करेगा, मे बी ओवरलैप कर सकता है। अरे वो वैसे इन गेम चैट देखना है क्या तुम लोग को? लाइक तुम लोग इंटरेस्टेड हो क्या वहाँ पे? नहीं तो मैं मैप के यहाँ पे रख दूंगा। लाइक ये मेन है,
बिकॉज मैं नॉर्मली किसी की चैट देखता नहीं है उतनी। मैं ELM प्रीफार्म किया 76 177 स्ट्रिंग लेस, ठीक है। गोल्ड तो 80 180 का आया तो सही है। तो 16 को करेगा। आई वॉन्ट टू सेव अप हाउ मच। हाँ मैं कभी भी चलेगा। आई कैन थोड़ा ज़्यादा अमाउंट देख कर मोटिवेट होता हूँ। अरे सही है सही है। कल एक सच फीमेल वॉइस आर्टिस्ट से मिला। सच फीमेल वॉइस आर्टिस्ट से ऐसा क्या करती है वो? वैसे मैं ये म्यूजिक का थोड़ा आवाज कम कर देता हूँ। सोर्स मांग रहे हैं नूब। अरे मैंने डेट एडेड क्या क्यों रखा है? मेरे को बाय टाइमलाइन डालना है। तो कौन सा तो अच्छा लगा था गाना, मुझे वो भी प्ले करना है। आई गेस वो यहाँ पे नहीं है। बार्ड्स एडवेंचर ना, ये तो नहीं था। अरे भाई खतरनाक वॉइस है बे भाई। वॉइस चेंजर लगाया रहेगा। ये लैंडन राइड के मजे नहीं ले पाऊंगा इन अरे एक काम करना, लॉग इन कर सकता है। हाँ मेरा ऐसा था कि जब मैं 10th एंड 12th में था, इवन मैं इंजीनियरिंग की जब एग्जाम्स दे रहा था, तब सीन ऐसा था मेरा कि मैं लॉग इन करता था। अरे हमता का वॉइस आर्टिस्ट है क्या बात कर रहा है? तो मैं सिर्फ लॉग इन करके डेली सन यही करता था। मैं इवन रेजिन्स नहीं यूज करता था कभी। भाई कॉटन टेल की वॉइस सुन, हेंटाई वॉइस एक्टिंग करती है, साला ऑर्गेज़म आ जाता है भाई। इसके लिए ऐसा नहीं जाने का, यू नो। तुम लोग पैंट में ही कर दो सब। उसको सुनने जाओगे तुम्हारी पैंट गीली हो जाएगी, समझ रहे हो ना तुम? दही निकल जाएगा पैंट से, पैंट में दही गिर जाएगा। आई मीन दही निकल जाएगा क्या? अरे यार हाँ ये सही है यार। हिकारू नारा एक एनिमे का नाम है या वो गाने का नाम है? कौन से एनिमे से है बाय द वे? वे स्ट्रीमर है, लाइव देती है लाइव देती है, मजा। अच्छा मजा, वाह। अबे वो गेमिंग की स्ट्रीम भी करती है ट्विच पे। इसकी बात कर रहा है तो मैं तो मैथ्स एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का डर है। अरे मैथ्स में मेरी भी फटती है बहुत गंदा। ये योर लाइन अप्रैल का है सॉन्ग। ओके तुम लोग को सुनाई आ रहा है ना वैसे? अरे हाँ ये ना सुमेरो में है वॉइस। You guys can hear the song, right? And music. Hikaru Nara. Oh, hi Kira. Welcome to stream. Hikaru Nara. हाँ हिकारू ना, अरे वो नाम मालूम है मुझे। मैं एनिमे का पूछ रहा था कौन से एनिमे से। अभी समझ गया। Your Lie in April. सुना है बहुत बार, कभी मैं भूल जाता हूँ नाम कौन से एनिमे से। सो यू नो साला मेरे को ना मेरे ये कैरेक्टर के लिए अकात्सुकी की हुडी मिल ही नहीं रही है। एंड अगर अकात्सुकी की हुडी मिली है तो मेरे को ये कैरेक्टर पे डालना है, मेरे ये करंट कैरेक्टर पे, पर साला वो भी नहीं दे रहे हैं एडिट करने। वो लास्ट टाइम मैंने जो VRM फाइल एडिट किया था वो बोलते हैं कि नहीं वर्जन मैच नहीं कर रहा। वर्जन मैंने गलत जो वर्जन में मैंने एडिट किया था वो डाला तो बोलता है कि नहीं आप वो अनइंस्टॉल हो गया था, इसके लिए ये हो गया। I play this in my school's Christmas event. Actually, this is one of the good music. Teamwork is strength. This is order. माँ कसम मरो भाई। Solidify. Let me scribe. भाई इसका शाओ का जो E है ना, मोना बेनी एंड जोंगली के बफ से मेरे को 88 के दिया E उसका। I was like damn. पर शाओ ने क्रिट किया वो बड़ी बात थी। तो शाओ क्रिट करेगा 88 के डैम। हाँ ना भाई रिकॉर्ड। डू यू स्टिल वॉच एनिमे? हाँ अरे मैं फिलहाल वन पीस देख रहा हूँ ना, इसके लिए मैंने बाकी कौन से एनिमे चालू नहीं किए साइड अभी। हाँ बाय द वे मिसफिट ऑफ डीमन किंग एकेडमी सीजन 2 आया है एंड उसका स्टार्ट भी बहुत सही है। आई लव्ड इट। वो मैंने स्टार्ट किया है साइड बाय साइड एंड माय हीरो एकेडमिया देख रहा हूँ बस। ऑफ कोर्स मेरे लेट्स डू माय एनिमे लिस्ट रिव्यूज वन डे। हाँ श्योर व्हाई नॉट। देख ले एपिसोड एक 5 मिनट रिलीज का। नहीं अरे पूरा रिलीज हो गया है, पूरा 20 मिनट का एपिसोड है ब्रो। पहला एपिसोड इसका अपना द मिसफिट ऑफ द डीमन किंग एकेडमी वाला। गोड पीस
देख लिया एपिसोड 1 5 मिनट रिलीज। कौन सा बोल रहा है भाई? तूने रेंट अ गर्लफ्रेंड एनीमे देखा है? हाँ। सीजन 2 नहीं देखा है मैंने, सीजन 2 स्टार्ट नहीं किया। आई गेस सीजन 2 उड़ा दूंगा मैं। अरे अब मैं थोड़ा लाइक वन पीस, मैंने लाइक अभी वन पीस का वो स्काइपिया आर्क है, उसका फिलर वाला जो मरीन बेस में जाके लैंड होते हैं वो कंप्लीट किया। मैं फिलर्स देख रहा हूँ बाय द वे ऑफ वन पीस बिकॉज कीरा क्या नाउ और लेटर व्हेनेवर यू आर फ्री। बाय द वे कल अकाउंट रिव्यू डे है, कल थर्सडे है, तो कल देख लूँगा। सीजन 2 पता है रात को 1 बजे देखा था मैं। कौन सा? यही मिसफिट वाला। तुम्हें चलेगा ना बाय द वे कीरा? ओह देन नाइस। टुमारो टेस्ट, हाँ टुमारो लाइक सबका रहता है ना, तो कभी जो कैरेक्टर है तुम्हारा तो वो देख लेंगे हम। बहुत नीचे है। वर्जन 3.4 का फेज 2 का डेट पता है? 4 दिन में आएगा वो। 4 दिन है ना अब? हाँ 5 दिन के बाद। है कहाँ ये? कमीशन है कहाँ? ऊपर था या नीचे है? मत देख रेंट अ गर्लफ्रेंड, साला टैग्स में क्रिंज है, साला कैरेक्टर डेवलपमेंट में। अरे टैग्स नहीं भाई, उसका लाइक अभी मांगा अच्छा हुआ है ऐसा मैंने सुना, बट एक मोमेंट में इतना हक दिया है ना मांगा में। भाई तेरा फेवरेट वाइफो कौन सी है? फेवरेट वाइफो अरे वो उसको जो हार्ट में प्रॉब्लम है ना, लाइक ऑफ कोर्स सीजरू जो है वो तो मेन ही है, ऑफ कोर्स वो है ही सबसे क्यूट। पर अगर उसके बाद अगर कोई अच्छी लगी मुझे तो वो जो उसको हार्ट में प्रॉब्लम है ना, आई गेस हार्ट में होल है उसका। क्या नाम है उसका? मिसफिट का सीजन 2। अच्छा अरे फेस का डेट नहीं मालूम। फेज 2 अच्छा फेज 2 का नहीं मालूम। नॉर्मली कितना 20 दिन का रहता है ना, तो 20 दिन पकड़ ले, 25 दिन के बाद। भाई मांगा में NTR इमेजिन कर रहा था MC भाई, पागल है साला क्रिएटर भाई। उसने लाइक खुद की ये कर दी मालूम है उसको, लाइक ट्रस्ट इशू इतना है ना। अरे उसका नाम क्या है बाय द वे? सेकंड वाले का बर्निकल सेंपाई के क्या नहीं बाय वाइफू इज हिरात्सुका शिजुका फ्रॉम ओरेगारू। अरे नहीं मैं ये आई गेस इसकी बात कर रहा है। क्या बोलते हैं फ्रॉम ये रेंट अ गर्लफ्रेंड की। रेंट अ गर्लफ्रेंड कैसा लगता? रेंट अ गर्लफ्रेंड में बहुत हगा है, बीच में बाद में उन लोग ने, अभी मैंने सुना कि लाइक रूल भी बता रहा था मुझे कि अच्छा क्या है आगे की लाइक मांगा में थोड़ा फिक्स कर दिया उसको। मेरी लब तो अकीनो, अरे ऐसे मत बोलो यार, ऐसे लाइक अभी तो हर एक एनिमे की ना हर एक वाइफो हो रही है। नारुतो में हिनाटा, उसके बाद अभी वन पीस में रॉबिन, लाइक फक नामी मतलब ओवर सेक्सुअलाइज्ड है। रॉबिन क्या सही दिखती है माँ? रॉबिन तो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद कह सकते हैं। मैं एनिमे का 14 नहीं हूँ। हाँ वो लीजा का 14 है। फैक्स। डू यू हैव एनी हॉट एनिमे टेक्स? लाइक कैसे बताऊँ? फिर एग्जाम्पल दो तुम लोग दो तो मैं बता सकूँ। ऐसा मैं लाइक बहुत कुछ है। मेरे 2 साल से फेवरेट वाइफो है अकीनो। इवन लाइक अगर इसकी बात करें, अरे क्या था एनीमे जिसमें अकीनो और रियाज थे, तो उसमें ऑफकोर्स अकीनो टॉप पे है। माँ का था अकीनो की एक अलग ही है हॉट ओपिनियन। सो माई कौन सा बोलूँ मैं? ये क्या किया मैंने? आई एम लो। हाय कार्तिक, वेलकम स्ट्रीम। नहीं मैं एनिमे का नाम ही भूल गया। Remember Jujutsu Kaisen? I thought that it was mid as fuck. बेडो कैसे लगती? कौन सी? गेंशिन वाली बेडो बोल रहा है या क्या बोल रहा है? इसमें इतनी खराब है। 8 फेब को नेक्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट है और उसी दिन होता आ रही है। अरे उसमें क्या है? नेक्स्ट सेमेस्टर की एग्जाम चालू नहीं हो रही है ना, या एग्जाम चालू हो रही है? एग्जाम चालू हो रही है तो रिप। अरे स्ट्रीमलैब को हटा दे वरना तेरी सारी चैट को बैन दे देगा। नहीं वो सिर्फ डॉट वाले को बैन दे रहा है रूल। भाई जेंशन मैन की क्रिएटर ने मांगा बनाया है, उसने बंदा डॉग बनता साला ईची है वो, बिल्कुल दे उसमें कुत्ते ही अब एनीमे आया उसको। गेंशिन वाली बेडो, हाँ बेडो ऑफ कोर्स, बेडो वाइफू है। एक हेल्प करोगे? बताओ ना क्या है काम क्या है?
अकाउंट रिव्यू है तो कल है अकाउंट रिव्यू बाय द वे, एंड डॉग का नेम भी पूछता रखा है। एक्चुअली आई नो राइट। तो व्हाट इज योर हॉट लाइक अच्छा तू एनिमे के बारे में बोल रहा है, लाइक मेरे को कौन सा अच्छा लगा फिलहाल तो लाइक ऐसा बोलूँ जाए तो मुझे डेथ नोट लाइक बहुत अच्छा लगा लाइक उसके बाद डीमन स्लेयर उसका सस स्टफ्स हमारे पास। अरे ये तू इसमें डाल सकता है 18+ में। मेरी शाव पे जेड नहीं है, लास्ट टाइम एक्वा मिला था, इस बार जेड पुल करूँ या येलन हॉट कंट्रोवर्शियल ओपिनियन इन एनीमे। अच्छा हॉट टेक कैसे, अच्छा ओके माय बैड कंट्रोवर्शियल ओपिनियन ऐसा मैं कहाँ पे बोलूँ, मैंने ऐसा ना लाइक अभी तक मैंने ये नहीं किया है लाइक यू नो वैसा फेस नहीं किया है कुछ। जुजुत्सु काइसेन का मुझे नहीं मालूम। माय लाइफ इज इन का सन डॉग था मोस्टली। मैं मुझे लाइक अगर कंट्रोवर्शियल लाइक एनीमे नहीं बोल सकता, पर मांगा में एक ऐसा हुआ था कि कंट्रोवर्सी हुई थी कि नहीं आई डोंट नो, बट ये जो मैं लाइक रूल और हम लोग डिस्कस कर रहे थे इसके बारे में, वही रेंट अ गर्लफ्रेंड वाला, वो भी चुमतियागिरी कर दिया था बहुत गंदा वाला। दैट्स अ हॉट वन। वन पीस इज डॉग शिट। अगर ऐसा बोला जाए तो और एक एनीमे था जहाँ पे बहुत गंदा किया था, तो नाम नहीं याद रहा, बहुत देखा। एक सेकंड ना बॉयज, साला रात को कौन मेल करता है, माँ कसम मैं नहीं करता, मैं ऐसा कल सुबह करूँगा रिप्लाई। व्हाट अबाउट शाओ देन? शाओ के लिए तुम ब्लैक क्लिफ पोल भी दे सकता है, आई मीन व्हाई नॉट। तूने तो देखा भी नहीं है। अरे तू क्यों डिफेंड कर रहा है एंड्रो? तू तो एनिमे का 14 नहीं है ना, तू तो लीजा का ही है ना, तेरे को क्या फर्क पड़ता है? सबके तो अपने अपने ओपिनियंस है। वैसे लाइक मेरे को फिलहाल ऐसा कोई ये नहीं लगा, ऐसा कौन आई गेस अगर कोई टॉपिक याद आ जाए तो उसमें मैं बोल सकता हूँ। पर जुजुत्सु काइसेन का क्या हुआ था? एंड्रो लीजा का 14, वही तो बोल रहा हूँ मैं। हार्फुल लिथिक पे चलता हूँ मैं। हार्फुल लिथिक में क्रिटेड वो ये वाला रिश्ता ब्लैक क्लिफ दे दे। ब्लैक क्लिफ अच्छा, मैं एनिमे का 14 नहीं हूँ। हाँ तो वही बोल रहा हूँ ना, तो क्यों डिफेंड क्यों कर रहा है? आ भी गया। मैंने एक चैप्टर पढ़ा था, फिर सोचा कि इसकी अडेप्शन आ जाएगी। गोजो सुकोना कैरेड, हाँ वो है। अगर ऐसा है तो लाइक भाई ब्लैक क्लोवर में भी इनिशियल ऐसा ही है। ब्लैक क्लोवर पूरा ऐसा मेरे को ना फुल कॉपी लगता है नारुतो वाला, बट ब्लैक क्लोवर आगे जाके इतना सही हो रहा है, बहुत सही हो रहा है। पहले लाइक आई वाज लाइक क्या हो रहा है भाई, ये भी ऐसा ही है। एंड टॉकिंग अबाउट ब्लैक क्लोवर एज अ एनीमे बहुत सही है, कहते रहते हैं सारे। हाय पलाक्षी, वेलकम स्ट्रीम। इतना गंदा दिखता है, देखना स्टार्ट भी नहीं करा सकता। बाय द वे वो बाद में बहुत सही हो रहा है, क्या बोलते हैं उसको, कैसा है मेरे दोस्त? मैं बहुत बढ़िया पलाक्षी, तुम बताओ कैसे? व्हाट आर यू डूइंग? अकाउंट क्वेस्ट करेंगे थोड़ी देर में, पहले अब ये करता हूँ मैं। लगा कि मांगा मिड हो गई कि प्लॉट आर्मर बाहर के। अरे मांगा फक्टअप कर दिया, मुझे लगता है ऐसा कि लाइक फक्टअप कर दिया बहुत गंदा वाला, बिकॉज उन लोग ने लाइक यहाँ पे किसी ने मांगा पढ़ा है क्या ब्लैक क्लोवर का? ये तो मैं स्पॉइलर दे दूंगा खाली फकट का। बेचा कौन प्लस 3.3 वाला मैंने पढ़ा है। लाइक भाई इन लोगों ने हद पार कर दी कि इसने, मैंने पढ़ा है, बेकार है माँ कसम। उन लोग ने ये जूलियस को ही भाई ये कर दिया। हाँ मैं थोड़ा पढ़ा है भाई, इन लोग ने जूलियस को ही ये बना दिया। एफी के बारे में सोच रही थी। अरे थैंक यू। सी मैं लोगों के दिल में राज करता हूँ, लोग मेरे बारे में बहुत सोचते हैं। अच्छा कुछ है नूबड़े जो कुछ और ही सोचते हैं। साला वन पीस का हाय बैड ओपी, आई एम बैक आफ्टर प्री बोर्ड्स। अरे हो गए प्री बोर्ड, सही है। न्यू लॉग इज ऑल्सो सिक नाउ, द मांगा इज बेटर राइट नाउ। अगर सिर्फ कोई कंप्लीटेड एंड अच्छा है
हाय सोहेल, हेलो भाई, क्या हाल चाल? अरे बस सब बढ़िया, तुम बताओ। अरे बाय द वे दिस ये म्यूजिक एंड गेम का लाइक स्पॉटिफाई पे म्यूजिक कुछ मैच नहीं कर रहा, बट स्टिल वी आर वाइबिंग। नेवर माइंड, I'll not like close it. Bad OP, thank you so much for subscribing the channel. We are glad that you are here. Because I am here. Yeah. So सीन ऐसा है, अगर मांगा सबसे अच्छा है तो AOT, देन अपना डीमन स्लेयर, उसके बाद और किसका बोल सकता हूँ मैं मांगा। माई हीरो एकेडमी अभी बहुत सही है, लाइक अभी का आर्क जो चल रहा है ना माई हीरो एकेडमी का, बहुत ही बढ़िया है। अगर कोई हगा है ना मांगा में तो बोरुटो में हगे है। माँ कसम बोरुटो ने पूरे एक्सपेक्टेशंस लो कर दिए। हाय आदित्य राजपूत, आई एम बैक आफ्टर प्री बोर्ड। अच्छा, अरे तुम भी आ गए, वेलकम वेलकम। अरे स्वैगर ने अपनी चीची चलाई और जब चीची ने मोन किया तब स्वैगर का खड़ा हो गया। क्या स्वैगर को क्या हो रहा है? लोलिकॉन स्पॉटेड है, लोलिकॉन स्पॉटेड। मेरा तो नहीं होता, मैं ऐसा नहीं है। मैं चेका मांगा पॉग एज फक है। बोरुटो इज बवासीर है। बवासीर भाई, बवासीर को भी बवासीर हो जाए, ऐसा बवासीर है वो। मतलब कोई सेंस ही नहीं कर रहा, जैसे मैंने अभी जो बोला, जो सेंस नहीं करता ना वैसा ही बोरुटो है, कुछ सेंस नहीं कर रहा। मतलब क्या ही हगा है। मैं तो अजूर लेन खेलना शुरू कर दिया, वर्ल्ड वॉर 2 के शिप्स पे बेस्ड है, तो काफ़ी नॉलेज मिलती है हिस्ट्री की। हाँ तेरे को तो लगेगा ही भाई। मैंने आज 120 विश किए, कुछ सारा C6, रोजारिया C4, रेडन शोगुन C1, टिग्नारी मोना C1, व्हाट द फक। और मेरा मैं F2 PO। माँ कसम इतने पुल्स। राइडन चाहिए तो राइडन मिलने के बाद, लाइक राइडन के बाद तुम लोग को ये सब मिला या राइडन के पहले मिला? आई गेस राइडन के बाद ही मिला है। टिग्नारी एंड मोना कैसे? आई गेस पहले टिग्नारी मिला रहेगा, देन राइडन, देन मोना, ऐसा कुछ तो रहेगा। उसे तू ही पूछ ले, मुझे डर लग रहा है। मैंने गेंशिन खेलना छोड़ दिया, सिर्फ अलाइतम आ जाए फिर खेलूंगी। मेरा प्री बोर्ड कल ख़त्म, बट कल इजी सब्जेक्ट है। अरे ऑल द बेस्ट बाय द वे। AOT वही NTR वाली मांगा ना, और तो डीमन स्लेयर वही है ना जिसमें लास्ट में गोटे जैसे दिखने वाले बच्चे को मारते हैं। कौन? रेडन C1 120 पुल्स। डैम। हाँ ना, पर सही है। मेरे को साला मेरे को नहीं मिल रहा। मेरे को लाइक अभी मिल सकता है, बट मैं नहीं जाएगा। मैं रेडन के लिए अब नहीं जा रहा। मैं ये ऐलान लूँगा, उसके बाद जो आर्कॉन आएंगे वो आर्कॉन के, मैं सिर्फ आर्कॉन के लिए जाऊँगा। अभी वंडरर के लिए आगे जाऊँगा मैं, बट लाइक फ़िलहाल अभी मेरा गोल है कि लाइक आगे जब जोंगली आ जाए तो उसको एंड राइडन की जो अगली जब भी कभी उसका बैनर आएगा तो C6 के ये करूँगा। तो राइडन से दुखी है। हाँ दुखी हो गया मैं, साली आई नहीं वो, उसने मेरा काट दिया माँ कसम। ले ले रेडन C2। अरे अभी नहीं हो रहा है यार, अभी येलान लूँगा मैं, सिर्फ येलान मॉमी के लिए जाऊँगा बिकॉज गारंटीड है, तो येलान ले लूँगा एंड बहुत क्लोज हूँ मैं। अरे ये एक टाइम पास वाला ये है यहाँ पे। 2 पुल करके गुस्सा हो रहा है। 2 पुल? अरे भाई 60, मेरे 60 पुल्स हो गए। मेरे को लगा अर्ली मिल जाएगी, स्ट्रीमर लग रहेगा मेरे साथ। स्ट्रीमर लग तो तुम लेके गए, मेरा तो 22 पेटी है। अलाइतम आना मुश्किल है। तुम खेल नहीं रही हो, नहीं तो तुम्हें इजी प्रीमोस मिलते हैं। एफी चैट, कौन सा चैट मिस गया? 60 पेटी भी था इसका। इधर एक डीलुक, एक रेडन, एक सारा 100 पुल्स। अरे चुप रहे तुम सारे मेरा लग लेके जाते हो, बाद में मेरे को बोलते नुब रहे हो कि मेरे को ये मिला वो मिला। चुप रहो सालो। आई नो बट सिर्फ 65 फेट्स है मेरे पास। 65 फेट्स है तो हो जाएगा आराम से। 65 है तो क्यों रो रही हो? एंड गारंटीड है या 50-50 है? बैन दो पलक्षी को। माँ कसम यहाँ पे एक तो 60 पुल्स हो गए हैं। अब मेरे को नहीं करना बिकॉज सॉफ्ट पिटी पे आ गया मैं। महाराष्ट्र सेट कब होगा? क्या मतलब आइडिया है? महाराष्ट्र सेट होगा मतलब क्या सेट होना है? एंड 30 पिटी 0 प्रेमोस। 50-50 है। फायर 50 पिटी है। ओह Thank you for मेरा लाइक गारंटीड है, तो येलान के लिए जाऊंगा मैं। साला इधर 930 प्रेमो एक पेटी। add Astro. कोई बात नहीं, 50-50। एंड तू हुताओ के लिए जा रहा है? किसके लिए जा रहा है तू बाय द वे? तभी प्री फार्म कर चुका।
मेरा शायद येलान का हो गया, आई गेस उसको एचपी देना है वो भी। अच्छा येलान के लिए राइट, अरे हाँ उसको व्हाट द फक हैव आई डन? मॉन्स्टर में फारूक, हाँ नहीं। तो मैं ऐसा बोल रहा था कि ओ फक, अगर अलाइतम और उसका वेपन मिल गया तो शाओ के लिए या फिर होमा फॉर श्योर। शाओ, तेरे पास शाओ है ना, क्यों शाओ के लिए जा रही है? शाओ लाइक C6 ही सही है। लवली थंबनेल डियर, थैंक यू ओजी राशु। राशु भाई वेलकम टू स्ट्रीम। कैसा चल रहा है, कैसे गई थी आज की स्ट्रीम? आज मैं आया ही नहीं यूट्यूब पे किसी को देखने। अरे मेरे पास शाओ नहीं है। व्हाट, तेरे पास शाओ नहीं है? अच्छा तेरे, हाँ तेरी बहन के पास है शाओ। अलाइतम क्यों कचिंग यूज करो, बढ़िया चला। अरे सही है। हाय अल्फा वंस अगेन। माय टारगेट इज हुताओ which is guaranteed, then Yelan, then Nahida, then save until Hydro Archon came. हाँ मैं भी Hydro, see अब मैं लाइक Yelan के बाद सिर्फ Hydro Archon के लिए जाऊँगा, Fontaine, नहीं तो और किसी के लिए नहीं जा रहा मैं। हाँ अगर बीच में लाइक राइडन एंड जोंगली आया तो इनके C6 लूँगा मैं। मेरे को जियो डैडी C6 चाहिए, माँ कसम मार दूंगा सबकी। मेरे को जो टीम रखनी है ना मेरे दिमाग में, मेरे को हमेशा लाइक अलग टीम्स ट्राई करनी रहती है जो लाइक कोई ट्राई नहीं करता। उंगा बुंगा से मेरे को करना है। पर मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरे को हीलर डालना पड़ता है टीम में, इसके मेरे को अटैक करने को नहीं मिलता अब इसमें। लेकिन मैं पूरा एग्रेसिव खेलता, ना मैं डॉज करता ना मैं देखता रोटेशन क्या चल रहा है कैसा चल रहा है। हगना है तो पूरा जम के हकता हूँ मैं गेम में लाइक अबिस में। तो उससे अच्छा लाइक अगर जोंगली C6 हो जाए तो सही है। मालूम है कम HP देगा पर घंटा फर्क नहीं पड़ता उसमें। राशु बिरो का C6 जोंगली, क्या बात कर रहे हैं? अरे हाँ मुझे लगा मेरा चैट नहीं आ रहा लाइक लास्ट टाइम हैपेंड। नहीं, मैं तो हुताओ के लिए कभी नहीं जाऊंगी, मैं सिर्फ होमा चाहिए या फिर एक्वा सिमुला। अच्छा वो दोनों मस्त वेपन है। अरे मुझे करना है अपना C6 जोंगली। C1 हो गया, C5 टू गो। भाई तिगनारी और मोना एक टीम में सही रहेंगे क्या? क्यों नहीं रहेंगे, सही रहेंगे। बट लाइक जो अगर तुम्हारे पास कोई डैंड्रो नहीं रहता तो रेडन की टीम में लाइक ब्लूम के लिए सही है। मेरा C2 हुआ है जोंगली। अरे तो सही है ना, मेरा C1 ही है जोंगली, C2 नहीं है मेरा। वैसे भी होता ने धोखा दिया। क्यों ऐसा क्यों यार? ये आ गए मच्छर। मेरा पे C0 जोंगली भी नहीं है। मेरे पास तो होता और येलान भी नहीं है, लेकिन मैं होमा निकाल रहा। मैं सोच रहा हूँ लाइक फॉर एग्जांपल नो कॉन्स बट मैनी कैरेक्टर्स लाइक अगर मेरे को लाइक हाँ सी मेरे पास अगर प्रेमोस बचे तो मैं हुताओ के लिए जाऊंगा एंड हुता एंड होमा के लिए जाऊंगा बोथ। मेरे को उसका वेपन का कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता लाइक हाँ अगर कैसा है कि हाँ वेपन बैनर पे भी पुल करूंगा सो दैट अगर मिला तो होमा मिला तो सही, नहीं मिला तो एंड अगर मैं हार गया मेरे को वो दूसरा वेपन मिला तो भी लाइक मेरे को विन विन सिचुएशन है। बट पहले लाइक मैं येलान पुल करूंगा, उसके बाद देखूंगा बाकी का। साला कुछ नहीं चाहिए मेरे को, बस एक विटसेट दे दो गेम वालों। AR-58 होना आया, कब दोगे? अभी तक विटसेट नहीं मिला। व्हाट द फक। C2 राइडन विद होमा, अरे वो मार देती है यार पूरा। रेडन नेशनल टीम कंप्लीट हो गई पर समझ नहीं आ रहा C6 आ रहा और बाकी 5 स्टार कैरेक्टर का क्या करूं? काजुआ है एक्चुअली, काजुआ बेनी देन सारा एंड राइडन, ये सही टीम है। क्या मतलब खत्म कर देती है वो। अब 6 या 8 सेकंड्स में कुछ तो कंप्लीट होता है अगर रोटेशन सही से गिरा तो। मैंने वीडियो देखा है एक का 6 सेकंड में उसने अभी क्लियर किया था। अरे मार, कल मारेगी क्या? कल मारेगा क्या मतलब? अरे ये पिलर को अटक है। मुझे तो हुताओ निकालने का इंस्पिरेशन 2B से मिला आफ्टर आई सर्च अबाउट हर। फिर पता चला इतनी क्यूट है, डिसाइडेड टू यूज माय गारंटीड ऑन हर। सही है। काश मेरे पास कुकी होती मैं अकाउंट में, वो साथ में हेलन और अलाइतम बहुत जोड़ होते। हाँ मैं रेडन काजू मोना बेनी यूज करता। वही हाइपर कैरी है जो
जो अच्छा वेट व्हाट एक जेड मिल जाए तो अच्छा है। ओपी गेम प्ले भाई। अरे धन्यवाद भाई। साला मिलता अच्छा है पर साला रोल घटिया होता है हमेशा। अब स्वैगर की आते शांत हो गई और जोर जोर से चिल्लाया कि हिलाओ हिलाओ आ गई। क्या भाई स्वैगर के मैं बोल रहा हूँ स्वैगर को किसी ने आज नशे दिया है। मैं हाइपर कैरी टीम यूज़ करता हूँ। हाँ भाई सही है वो। काजुआ बैनर के टाइम मुझ पर विशेष नहीं थे, वो मिस हो गए मेरे से। काजुआ नहीं तो लाइक सुक्रोस यूज़ कर सकते हो बट यू नो सुक्रोस उतना नहीं देगी जितना डैमेज लाइक डैमेज इन द सेंस वैसा तुम्हें लाइक यू नो एक आउटपुट नहीं मिलेगा जो तुम्हें काजुआ से मिलता है बट सुक्रोस चला सकते हो फिलहाल बिकॉज ऑप्शन क्या है। रुक जा तू सभी पिलर डालने ले। अरे साला भाग गया। अरे हाँ यार मुझे डर लग रहा है इसकी माँ का मच्छर। ये क्या जंपिंग जपांग खेल रहा है बे। सुक्रोस भी नहीं है क्या बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है। सुक्रोस कैसे नहीं है। ऐसे कैसे सुक्रोस नहीं है। एनिमे ट्रैवलर है। एनिमे ट्रैवलर उतना नहीं देगा बे। फारुजान है फारुजान के लिए हाँ। अरे बट एनर्जी का बहुत इशू होगा बाद में टीम में। हेलो हाय लॉर्ड सैटर्न वेलकम स्ट्रीम। एक चैट में मॉइस है एक सुक्रोस कैसे नहीं के ऊपर का भाई 3 दिन में 3 लाइनर आरटी सिंगल क्रिट के साथ पे लेवल 4 पे क्रिट आया। मेरा लाइक इसमें नसीब बहुत गंदा है। ऑफ स्ट्रीम करता तो अब ऑफ स्ट्रीम भी नहीं होता। आई थिंक लीजा स्किन आने के बाद सब लीजा बिल्ड करेंगे। घंटा लीजा बिल्ड लाइक लीजा का स्किन बहुत ये नहीं है कुछ रिवीलिंग नहीं है। फारोजन विद राइडन मैं पूछ रहा हूँ बे ना कि वो बोल रहा हूँ वो टीम में डाल। मैं एनिमो के बारे में पूछ रहा हूँ। मैं थोड़ी बोला वो वहाँ पे यूज़ कर। गेंशिन में मैं फर्स्ट टाइम विश किया आज दोस्तों ने विशेस से मेरी लीजा तो बेल्ट है बना दो चिकन एंड माय स्प्रिंग। क्यों तुझे आयाका की स्किन अच्छी नहीं लगी ना। दोनों अच्छी नहीं है दोनों घटिया है। मेरे को तो नहीं अच्छी लगी। चेंज माय माइंड भैया इसका तो अल्टी रह गया। भाई गेंशिन से ज़्यादा अच्छी स्किन आयाका की स्किन तो नल्ली है पर लीजा की अच्छी लगी। लीजा की लाइक इट्स ओके रिवीलिंग नहीं है बट इफ यू नो यू नो लाइक कंपेयर टू आयाका लीजा की तो अच्छी ही है। आयाका की स्किन में कुछ स्पेशल नहीं है। लीजा की स्किन बेटर है आयाका की बारबारा जैसा ही है। बार में क्या ही देखना है तुम्हें। फिनिशिंग रे रेवन की स्किन्स क्या ही होती है। आई डोंट नो यार पीजीआर मुझे नहीं मालूम। लिया को बिकनी में लाना था क्या। क्यों नहीं कंपेयर टू लीजा की जो नॉर्मल स्किन है वो सही है। सुक्रोस है क्या रेडन के बैनर में है? नहीं सायु है। See what I was thinking I will have 120 fates till the end of 3.2 Valken है मुझ पे। सो पहले ये लैन पुल करता फिर होमा फॉर शाओ तो करता एक्विला मेरा तो R2 कर दूंगा। व्हाट से चलेगा। सी तुम्हारा चॉइस है ये तुम्हारा पूरा ये रहेगा। फिर 11 में मैं 2B का आउटफिट बनाया था और उसका नाम था रिवीलिंग आउटफिट। व्हाट अबे वो टीचर थी सुमेरो में तो उसकी हिसाब से बनाएंगे ना टीचर। बॉय एफी गुड नाइट कल एग्जाम। अरे ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम बाय द वे। लीजा की जो नॉर्मल मॉन्स्टर वाली स्किन है वही सही है। चाइल्ड 4 लीगेसी स्किन आ जाए फिर बोलना मेरे को कोई आइडिया नहीं है वो गेम के बारे में तो सब मैं तुम्हारा चैट पढ़ा। अरे माँ की आग भाग गया वो। आई एम कंफ्यूज हेल्प मी। हाँ तो वैसे जा सकते हो लीजा स्टूडेंट ही ना। हाँ ना वो टीचर कहाँ पे थी ब्रो। आई एम कंफ्यूज। लीजा तो स्टूडेंट लीजा तो एकेडमी में पढ़ती थी।
हाँ लीजा तो मेरे की स्कॉलर थी ना। क्या कर रहा हूँ मैं? क्या घटिया मिल रहे हैं मैं कसम। लीजा तो चूरन क्या बोल रहा है भाई? एंड्रो टाइम आउट दे देगा तुझे? एंड्रो को गुस्सा आता है बहुत लीजा को कुछ बोला तो। है ही वैसा लीजा का 14। भाई एफी तूने अभी तक डिस्कॉर्ड में मुझे रिप्लाई नहीं दिया। कौन सा तूने वो? अरे हाँ मैंने तेरे को रिप्लाई दिया है। आई गेस वो तू ही है। तेरे को आई गेस मैंने रोल नहीं दिया, वही वाला ना। तेरे को रोल नहीं मिला, मैंने तेरे को रिप्लाई डाला है, देख तेरे को रिप्लाई डाला है मैंने। आई गेस वो तू ही है। किसी का तो मैसेज, अरे मेरे को रिक्वेस्ट आया था वो मैसेज का। यू सेड लीजा टू चूरन। मैं नहीं बोला बे, चूरन क्यों बोलूंगा मैं लीजा? मुझे तो जोंगली की स्किन। अरे जोंगली का क्या स्किन है? हाँ इन्होंने मुझे भी मैसेज किया था। तुझे किया था मैंने मैसेज? नहीं बे, मैंने किसको मैसेज किया? अरे मैंने किसको मैसेज किया फिर? अरे कि मेरे को लाइक किसी ने मैसेज किया था कि डिस्कॉर्ड का मेरे को रोल नहीं मिला करके पर्सनल पे, और मुझे वो मैसेज लाइक इस पे नहीं आया तो मैंने वो एक्सेप्ट किया डायरेक्ट मैसेज वाला। क्या है मच्छर इसकी माँ का? क्या हाथ पे क्या रखा है? हर्ष तू ही था क्या वो? अरे हर्ष ने मुझे मैसेज किया था। अरे इसका नाम क्या है? इसका हर्ष ही नाम है क्या डिस्कॉर्ड वाला? मुझे किसी ने तो मैसेज किया था, मैंने वो एक्सेप्ट किया, उसको मैंने रिप्लाई दिया कि मेरे को भी मेंबरशिप का रोल नहीं मिला। तो मैंने उसको बोला कि तूने पहले नॉर्मल रोल्स तो लिया है क्या? नहीं, आई डोंट नो, तुमने अगर डिस्कॉर्ड देखा है तो देख लो। कुछ तो बहुत बड़ा नाम है, जेड से कुछ तो नाम है, जेड या एफ से कुछ तो नाम है, मुझे भी याद नहीं है, कुछ और ही नाम है। हाँ, मैंने ही मैसेज किया था, रोल लिया है शायद, एंड ये यूट्यूब नेम है मेरा। हाँ तो हाँ मैंने तेरे को रिप्लाई दिया है, देख। एल्डन रिंग खेलेगा? मेरे पास एल्डन रिंग है ही नहीं। अरे लगा देना अपने घर पे। अरे हाँ है ना यहाँ पे, मैंने यहाँ पे ही लाया है। थैंक यू पहला। ये किसने बंद कर दिया स्विच? अब आओ सालो, अब नहीं मरे ना तो सू कर दूंगा मैं। और 10 आउट ऑफ कौन सा? बाय द वे हाई डिमोन रेवोल्यूशन, वेलकम टू स्ट्रीम। 10 आउट ऑफ व्हाट? एल्डन रिंग में इसका पीसी चला जाएगा? नहीं चलेगा मेरा एल्डन रिंग में भाई। मेरा वैलोरेंट भी चल रहा है आराम से। उस दिन हम लोग वैलोरेंट की स्ट्रीम देख रहे थे, सही चल रही थी। लाइक आई गेस अल्फा था बहुत देर तक। एल्डन रिंग में हाँ। Demons do not stop for the raid. Move. I need the key. मेरा टीपॉट रिव्यू कर दो। टीपॉट रिव्यू कल करूंगा तो चलेगा? कल अकाउंट रिव्यू है तो सब हो जाएगा। एंड लाइक मैं मैंने दोस्त को भी दिखा रहा था वैलोरेंट की स्ट्रीम कल की, लाइक जिसके साथ मैं खेलता हूँ। विज तो मालूम रहेगा तुम लोग को। तो वेस के साथ वेस को बता रहा था मैं कि मैं वैलो स्ट्रीम कर सकते हैं। वैलो छोटी बच्ची है। डीमन आई एम सो सॉरी। एफी क्या हाल है? हाय कॉडेक्स, वेलकम स्ट्रीम। मैंने कभी टीपॉट रिव्यू किया नहीं है किसी का, तो मैं मेरा खुद का टीपॉट इतना गंदा है कि मैं दूसरों का क्या ही रिव्यू करूँ। मेरे को कंपेयर टू मेरा छोड़ के दूसरों का अच्छा ही लगेगा टीपॉट रिव्यू। हाँ अरे हम लोग करते थे पहले टीपॉट रिव्यू, मैंने लेरोस का देखा था। नमस्कार एफी चिच्चा कर रहा था। चलो कल करते हैं, अभी चिल करो बे। अभी मेरे को लाइक उसके बाद मैं यही करूँगा, कौन का स्टार्ट करूँगा। बाय द वे हाय तनिष, बाय द वे वेलकम टू स्ट्रीम। चिच्चा बोल दिया यार मेरे को, ठीक है। मारो और मारो। ओके मेंबरशिप ले लो रिव्यू के लिए। नहीं अरे वो बहुत ये होता है रे, ना इंसाफी हो जाती है इधर। सारे ये लोग यही क्यों लाते हैं हमेशा? ए मारना नुबड़े। इसने डक कर दिया साला क्राउच वॉकर। अभी ले। अरे ये क्या बता रहे हो? मेरा टीपॉट देखकर हर कोई बोलेगा ये क्या टट्टी है।
भाई मेरा तुमसे बड़ा टट्टी है। Let's light it up. मैंने सिर्फ ऐसा झुंड में डाला है सब ना, मुझे कुछ मालूम है। मैंने तो मैंने नहीं बनाया था, मेरे दोस्त को दिया था। ब्रो 60 के बाद और कितने पुल्स लगेंगे रेडन के लिए? 60 के बाद ना ऐसा कुछ ये नहीं है, तुम्हें कभी भी मिल सकता है, बट लाइक हार्ड पिटी रहती है। देन लाइक 80-90 के इसमें तो तेरे को आराम से मिल जाएगा। हाँ बट 60 के बाद मिलना चालू हो सकता है, कभी भी मिल सकता है। Solidified. वे मर बे। ऐसे बोर्ड्स आ रहे हैं। हाँ आई नो, बाय द वे जिसकी भी बोर्ड्स है बॉयज एंड जो लाइक मेरी स्ट्रीम देखता है एंड बोर्ड्स में है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अच्छे से करो स्ट्रीम में। अगर तुम लोग को नहीं जम रहा आने को तो मत आओ। मैं कभी गुस्सा नहीं होता किसी पे, लाइक तुम लोग स्ट्रीम पे नहीं आते बिकॉज तुम्हारी एग्जाम्स है, एग्जाम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले एग्जाम्स पे ध्यान दो। स्ट्रीम तुम कभी भी देख सकते हो, पीछे भी जाके देख सकते हो। तो इफ यू गॉट समथिंग फॉर आर्टो नाउ ही डज 27 to 29 रैम ई, उसका ई बोल रहा है राइट। आज दिन में 20 पुल्स पर कर पाऊंगा। 20 पुल्स मुश्किल है, मुश्किल है। आप भी डिस्कॉर्ड पे ऑनलाइन हो? मैं नहीं रे, मैंने बंद कर दिया डिस्कॉर्ड। मैंने कभी ये लैग होता है स्ट्रीम, इसके लिए डिनर करते आता। हाँ श्योर जैनो, बाय द वे तुम ज्वाइन कर सकते हो। कभी कभी मैं ऑनलाइन रहूँगा तो नॉर्मल बात कर लूँगा। बाय द वे मेरे को पर्सनल मत भेजो यार, मैं कभी भी रिप्लाई देना भूल जाता हूँ। मैं खोल के बैठता हूँ लाइक चैट, पर रिप्लाई करना भूल जाता हूँ। मेरे को तुम लोग सर्वर पे टैग करो, मैं सर्वर में किसी के साथ भी बात कर लूँगा। अगर डीसी में एकदम एक्टिव रहा तो मैं लाइक नॉर्मली बात कर सकता हूँ। कि माँ का यार इन लोग ने अटैक ही नहीं किया। लाइक पर्सनल में ऐसा होता है कि मैं खोल के चला जाता हूँ चैट, मैं भूल जाता हूँ कि अरे मैंने किसके तो चैट खोली थी। तो वो अच्छा ही है कि लाइक मैं और किसी को डिसअपॉइंट ना करूँ, तो इससे अच्छा मेरे को यही करो। अगर मैं रहा ऑनलाइन तो यू नो आई कैन रिप्लाई तो कर सकूँ। कैसे नहीं लगा? 50 to 50 रेशियो एंड हिट वेपन इज लेवल वेपन इज नो मैच। कौन सा वेपन? Let me scry. अबे बारिश कहाँ है? बारिश क्यों नहीं दिख रही? मैं मेन है उसका फाइनल गॉट इट। अच्छा तो सही है। तो 50 वाला क्रिट रेट, मतलब मैं वही सोच रहा हूँ कि वो क्यों दिया है। लाइक कुछ लाइक क्रिट रेट थोड़ा कम था पहले, मैं बोलने वाला था, बट क्रिट रेट इनक्रीज कर ले। हाँ बट वो उसके वेपन से हो जाएगा। 60 है ना उसका वेपन अभी। तो उसका लाइक वेपन 60 है तो आराम से हो जाएगा, 50 के ऊपर चला जाएगा। 15 पुल्स कैसे तो ग्राइंड करना होगा, 5 पुल्स ऑलरेडी है तो 10 पुल और करना है तुझे, और 10 पुल चाहिए तुझे। 70 के पास क्रिट रेट कर दे। हाँ 70 तो ऑफ कोर्स लगेगा। अरे माँ कसम हक दिया। हाँ क्या क्या ये ले नुबड़े। Delve into destiny. ए मारना, कल मारेगा भाई। ये लोग मारते ही नहीं है। अरे फक आई मिस्ड। और कहाँ है तुम लोग? एक सेकेंड। Let me scry. इसको पहले देखता हूँ। Let's light it up. Shadows of fate. खुदक के मारूंगा इसको। बेटा उसको पानी में लेके जाती तो और मजा आता। क्यों? आ गया मजा, आ गया स्वाद। अच्छा हाँ सबके चार्ट्स पढ़ता हूँ वैसे, सॉरी। 90 बेसिस पर 100% रिटर्न मिलती है। हाँ वो तो है। मैथ्स नहीं है
है इस बैनर में 3 न्यू वेपन मिले हैं इसलिए नो मैच गॉट एनगल्फिंग लाइटनिंग व्हाट द फक एमोज एंड नाउ हरा मेरा लक को ज़्यादा अच्छा तो वो अलग बात है क्या बात कर रहा है एफी आपकी गर्ल गेटिंग टिप्स से डीआरएस फ्रेंड को का पढ़ बट अब फोकस शिफ्ट क्या मिल गया मैं जो पढ़ रहा वो सही सही लिखा है तूने मैं है बट अब फोकस शिफ्ट कर दिया है फ्रॉम गर्ल्स टू बोर्ड्स ठीक है अरे बोर्ड्स पे फोकस दो नहीं तो माँ कसम बोर्ड्स में भी हक दोगे और लड़की के टाइम तो और ज़्यादा हक जाओगे आप तुम्हें सबसे लेवल इज इक्वल टू अच्छा ओके 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 हिंदी ओके ओके नहीं मैं समझा नहीं मैं वो वर्ड इसके लिए मैंने बोलने से पहले लाइक किसी की सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं करना चाहता मैं नहीं तो बोला ये क्या बोल रहा है मैंने क्या लिखा है तू क्या पढ़ रहा है 100 है और से क्या है चल नो प्रॉब्लम और क्या चल रहा है अरे बस गेंशिन की स्ट्रीम ऑफिस का काम इसमें ही मेरा दिन चला जाता है सुबह से शाम ऑफिस का काम उसमें से थोड़ा टाइम बकचोदी करता हूँ लाइक फ्रेंड्स के साथ वालों खेलता हूँ ब्रेक में लाइक लंच ब्रेक के टाइम तो लंच ब्रेक के बाद फिर से काम दैन थोड़ा देर आराम तो वैसा लाइक रहता है इतना भी नहीं बट उसके बाद स्ट्रीम का कुछ तो सकता हूँ तो सी लैंग्वेज का फाइनल प्रैक्टिकल कैसे होता है कुछ आइडिया तुम्हारे लाइक प्रैक्टिकल क्या मेरे तो लाइक प्रैक्टिकल अच्छा वाइवा ज़्यादा होते थे प्रैक्टिकल का मैं तो लाइक नॉर्मल कोर्स रहेंगे पैलिंड्रोम वाला रहेगा उसके बाद वो पैटर्न वाला रहेगा उसके बाद और कौन सा है लाइक तेरे जो नॉर्मल रहता है ना कोर्स उतने कोर्स रहते हैं फिर ब्रो बिजी एज ऑलवेज हाँ ना कुछ तो रहता ही है लाइक मैं स्टोरी राइटिंग भी करता हूँ तो थोड़ा बीच में स्टोरी राइटिंग करता रहता हूँ जब टाइम फ्री मिलता है तो डिस्कॉर्ड में डिस्कॉर्ड में तो सिर्फ मेरी आंटियों का शिट देखता रहता हूँ 3 आंटियाँ आंट करती रहती है चैट पे पूरा तो वो टैग करती है मेरे को कुछ भी बोल देती है आज मच्छरों को मेरा पैर पे नहीं लाइक खून मिल रहा है हाथों पे मिल रहा है सब पैलेट तो हार्ड है भाई अरे चीट लेके जा माँ कसम पेन ड्राइव लेके जा पास हो जाएगा ये कोई यूज़ मत करो मैंने नहीं कभी यूज़ किया है मैं ऐसे बोल रहा हूँ मेरे को सीरियसली मत लो प्लीज़ बकचोदी कर रहा हूँ मैं तो कोई आ जाएगा बोर्ड वाला उठाने धर इसकी माँ का इसको धर पकड़ हो जाएगा मेरे साथ पैटर्न वाले तो आएंगी एंड स्वैपिंग ऑफ 2 नंबर्स ये क्या होता है क्या वो अरे 22% है अभी उसका वेपन एटलीस्ट आई थिंक इट विल गो टू 44 और 50 क्रेडिट क्या हरान पेन ड्राइव लेके गया तो डिटेन कर देंगे पकड़ा गया तो डिटेन कर देंगे एस्केप द मैट्रिक्स गाइस पकड़ा गया तो डिटेन होगा तू भाई मेरे यहाँ पे ऐसे बकचोद थे ना कॉपी करने में पेन ड्राइव लेके आते थे मैं तो कॉमर्स में हूँ भाई कुछ टिप्स कॉमर्स वालों को मैं क्या टिप्स दूँ भाई तुम लोग तो लाइक जो मैथ्स करते हो उतना तो हमसे नहीं होता अरे हाँ मैट्रिक्स वाला भी आता है कि कुछ तो कोड है अरे यार मेरे को याद नहीं आ रहा है बट अरे मैं कहाँ जा रहा हूँ ब्रो बट थिंग इज लाइक सी के लिए सी लैंग्वेज के लिए तो लाइक सी स्वैपिंग ऑफ 2 नंबर्स रहेगा उसके बाद वो पैटर्न वाले रहते हैं हमेशा पैलिंड्रोम रहता है और कौन से थे यार और कौन से कोडिंग की है तुम लोग ने पैलिंड्रोम तो आता ही आता है पैलिंड्रोम कोड को तो मेरे को अभी याद भी नहीं है परफेक्ट पैटर्न वाला सब याद है मतलब स्विच स्टेटमेंट हाँ स्विच भी रहता है
कैलेंडर ये सब बेसिक्स है, लाइक बेसिक सी लैंग्वेज वाले जितने भी कोड्स है ना सारे करते जा। एंड कैलकुलेटर वाला कोड आता है, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, नेस्टेड इफ एल्स। हाँ नेस्टेड इफ एल्स रहता है। आई गेस तुम लोग को सिखाया रहेगा तो होगा नेस्टेड इफ एल्स, नहीं तो इफ एल्स एंड व्हाइल लूप एंड फॉर लूप तक रहता ही है। गुड नाइट बंटी, बाय सनी। अरे साला बच गया। ऐसे सिखाया तुम लोग को? लाइक तुम लोग को लाइक एग्जाम में सिखाया था नेस्टेड? चल बाय बाय बाय। तुम लोग के प्रीलिम्स नहीं हुए एंड्रो? तीर वो मार रहा है और ये लोग मार खा रहे हैं। अभी होंगे। किसको पता है क्या कि आईटी के पेपर कब होता है? महाराष्ट्र बोर्ड का आईटी का पेपर? आईटी तो लाइक हमेशा लास्ट में रहे। अरे फक कर दिया यार, मैंने फक अप कर दिया। अरे आओ भाई, तुम लोग को पहले मारता हूँ मैं। बिटवाइज ऑपरेटर्स एंड टर्नरी ऑपरेटर्स सिखाया है तो रहेगा, टर्नरी शायद से रहेगा। एग्जाम टाइम टेबल में भी नहीं है, उसको कुछ नहीं बताया है, उसका कुछ बताया ही नहीं है। आईटी तो हमेशा लास्ट में रखते हैं मोस्टली, लाइक उसका इतना लोड नहीं रहता पेपर में कभी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं क्या? अरे उसका कुछ और ही है तुम लोग का। भाई मेरा पिंग 250 का चल रहा है, मैं कौन सा सर्वर चलाऊं? ऐसा कुछ नहीं है ब्रो, नॉर्मली ये पिंग का इश्यूज बहुत लोगों को हो रहा है गेंशिन में, सो इसका उतना टेंशन मत, लोड मत ले। फिर तो सारा ही पढ़ना पड़ेगा। एंड्रो भाई कॉमर्स नहीं घंटा, एंड्रो साइंस लेके अपनी जिंदगी काट रहा है। भाई दोनों का कुछ बचा ही नहीं। मेरा यूरोप है सर्वर, यूरोप में तो आई डोंट नो, नाउ रिग्रेट पुलिंग एनगल्फिंग। साला पेटी बिल्ड था, मैं क्यों लिया? नेवर माइंड नाउ। अरे अब लिया तो सही है। स्ट्रक्चर शायद से नहीं पूछेंगे, पर अभी डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज एंड तुम लोग का लाइक एक्सटर्नल कौन आता है। बिकॉज साला एक्सटर्नल अगर अच्छा नहीं रहा तो और चिट्ठी अगर तुम लोग को, लाइक हमारे यहाँ पे चिट्ठी सिस्टम था, तो पहला मैं रोल नंबर हमेशा 1 था ना, तो मैं हमेशा ईजी वाला कोड लेता था। और अगर मेरे को बुरा कोड आ ही गया तो मेरे पास बहुत सारे ट्रिक्स थे पास होने के, तो फुल सेटिंग लगा के जाता था मैं। हाय आयुष। उनकी कातिल इतने अदाए, लेकिन हम उनसे नजरें ना मिला पाए। अरे 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 दुख है, दुख। हेलो ब्रोस की। हाय आयुष, वेलकम स्ट्रीम। कैसा चल रहा है? 2 आयुष है आज चैट में, एक लीजा का 14 एंड दूसरा अपना गुप्ता भाई। एक आयुष है जो 1 गोटे का है, दूसरा आयुष 2 गोटे का है। आई मीन दूसरे आयुष को नो हेट। हमारा लास्ट टाइम ऑड इवन सिस्टम, हाँ ऑड इवन तो रहता। अरे यार ऑड इवन देन ये ट्रू एंड फॉल्स वाला ये भी रहता है कभी कभी, बट ट्रू एंड फॉल्स बहुत इजी है, ऑड इवन भी नहीं आएगा। क्या किसको हॉल टिकट मिला है क्या अब तक? हेलो राहुल, वेलकम स्ट्रीम। भाई तेरा कौन सा सर्वर है? मेरा एशियन है, मेरे को यूरोप का नहीं मालूम इतना। मारो भाई मारो, भागो मत। हॉल टिकट कब मिलेगा? जान एंड तक तो मिलना चाहिए। तुम लोग के प्रैक्टिकल एग्जाम्स कब है?
प्रैक्टिकल एग्जाम्स के बीच में मिलता है। भाई मैं शिंगचो में कौन सा आर्टिफैक्ट चेंज करूँ एक बार बता दो। अरे मैं कल अकाउंट रिव्यू करने वाला हूँ बॉयज़, तो अगर रुक सकते हो तो सही है। Let's light it up. माँ कसम भाग क्यों गई? Solidify. Shadows अनलॉक एंड डीअनलॉक मेमोरी ड्यूरिंग रन टाइम आएगा? नहीं ये मुझे नहीं मालूम, हम लोग को नहीं था, मेरे को सी के टाइम नहीं था, इंजीनियरिंग में भी नहीं था ये। तेरा सीबीएस है? तू सीबीएस में है? सीबीएस में है या तो स्टेट में है? पहले ये क्लियर कर लेते हैं, बिकॉज नहीं तो माँ कसम मैं तेरे को बताते जाऊंगा, तू वो करने जाएगा, बाद में समझ गया ये आए नहीं। हाय बॉट, चैट तुम्हारी बात कर रहा है वो। कॉमर्स में भी होता है क्या? कॉमर्स में नहीं कोडिंग रहता, कॉमर्स में क्यों कोडिंग रहेगा? सीएससी का तो मुझे नहीं मालूम। स्टेट बोर्ड अगर स्टेट बोर्ड के रहेगा तो स्टेट बोर्ड में इजी आता है। स्टेट बोर्ड वाले कभी अपनी मरवाते लाइक बच्चों की मरवाते हैं, एक्सटर्नल मरवाता है, बट इन जनरल इतना भी नहीं मरवाएंगे, जो सिखाया उससे ही आएगा। प्रैक्टिकल्स रे एफी नहीं तुम कॉमर्स वालों के क्या प्रैक्टिकल होंगे मेरे को नहीं मालूम भाई। सीएससी बोर्ड सीएससी नॉर्मल सी मैं बोल रहा हूँ स्टेट बोर्ड मतलब महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड नहीं, इन जनरल तुम्हारे स्टेट बोर्ड से हो या सीबीएसई या आईसी या जो भी हो, यहाँ से हो। अकाउंट रिव्यू कर रहे हो क्या? नहीं आज नहीं, कल करूँगा अकाउंट रिव्यू। कल आईटी का प्रैक्टिकल होगा, एचटीएमएल एंड टैली होगा तुम्हारा। अच्छा हाँ आईटी के लिए, हाँ सॉरी आईटी में तुम लोग को सी एचटीएमएल रहेगा कुछ या वर्ड, तुम लोग को वर्ड या अगर कुछ सिखाएगा एचएससी। अरे एचएससी बोर्ड है, सही है। एंड सेमेस्टर के एग्जाम्स हैं। इंजीनियरिंग का पूछ रहा हूँ, इंजीनियरिंग में? अरे इंजीनियरिंग में ऑफ कोर्स, इंजीनियरिंग में तो लाइक ये जो मैंने बताया ना वो भी पूछेंगे। सी देखो प्रैक्टिकल में जितना सिखाया ना उतना पूछेंगे, देखो बाहर का सिलेबस का कुछ नहीं पूछेंगे। फॉर एग्जाम्पल तेरे 11 प्रैक्टिकल्स रहेंगे, 6 महीने में तेरे 11 प्रैक्टिकल्स या 8 या 9 प्रैक्टिकल्स हुए रहेंगे। सो सी मान के चलते हैं कि 11 प्रैक्टिकल्स रहेंगे। सो 11 प्रैक्टिकल्स में से पहला प्रैक्टिकल तुम लोग को दिया टू कैलकुलेट इवन एंड ऑड एंड टू कैलकुलेट एंड टू फाइंड द पैलेंड्रोम, नहीं टू पैटर्न वाला, ये 2 कोडिंग एक प्रैक्टिकल में रहेगा। तो ऑफ कोर्स इन दोनों का तो एक प्रैक्टिकल में 2 कोड हुए, तो ऐसे 10 प्रैक्टिकल में अगर बाकी के 9 प्रैक्टिकल में एक कोड हुआ बड़ा वाला, एंड उसमें तुम लोग को बोला कि आगे तुम लोग जाके थोड़ा कोड में एडिट करो, ये करो वो करो। तो ऑफ कोर्स अगर फॉर एग्जांपल 12 या 15 कोड रहेंगे तो वो 15 कोड पढ़ के मतलब प्रैक्टिस करते जाना। उस लाइक तुम लोग को क्वेश्चन थोड़ा चेंज करके दे सकते हैं। तुम लोग को बोलेंगे समझ 5 का पैटर्न तुम लोग को सिखाया, तुम लोग को बोले 8 का पैटर्न बना, नहीं तो फॉर वाइल लूप, नहीं तो वाइल लूप में ये इतनी बार रन होना चाहिए उसके लाइक हाँ 5 बार वाइल लूप तेरा रन होगा, उसके बाद एंड होना चाहिए। 11 प्रैक्टिकल कौन देता है? 11 की प्रैक्टिकल ईजी रहती है, पास हो जाते हो तुम लोग। हाय श्रेयस, वेलकम स्ट्रीम। हाँ जी भाई पढ़ाना होगा अब फिर तो। कॉमर्स में प्रैक्टिकल रहते हैं लाइक एक्सेल एंड एसक्यूएल वगैरह। हाँ टैली तो रहेगा, तुम लोग को टैली रहता है राइट। जीएसटी वगैरह कुछ तो रहेगा, तुम लोग को जो जीएसटी वीएसटी सिखाया है आई डोंट नो। एंड वाइवा फ्रॉम प्रैक्टिकल लाइक फ्रॉम प्रोग्राम्स या थियरी से। फॉर एग्जाम्पल सी तुम्हें लाइक क्लास के बारे में पूछ सकते हैं, क्लासेस क्या करते हैं, डेटा टाइप्स कितने हैं, उसके बाद हाँ डेटा टाइप्स कितने हैं, क्लासेस कितने रहते हैं, डेटा टाइप्स तो हमेशा पूछते हैं। उसके बाद ये बोलेंगे फॉर एग्जांपल इंट क्या करता है, इंटीजर के तुम्हें स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट बताएंगे, लाइक उसके कितने बिट्स है, देन कैरेक्टर में क्या है, 12 का टाइट्रेशन। अरे वो टाइट्रेशन सबसे इजी है, आई गेस 7.5 या 6.5 में आ जाता है राइट, नहीं तो 8 ऐसा कुछ तो रहता है। आई गेस उल्टा जाते थे हम लोग राइट, वो भरा रहता है 20 इंट 8 बिट है ना, यप 8 to 32 बिट ऐसा कुछ तो रहता है। वो कुछ तो अरे वो तुम्हें वैसा बोलेंगे लाइक वो नंबर -32 614 ऐसा कुछ तो है, +32 सम वॉट ऐसा कुछ तो है। तो यू नो वैसा रहता है सब, ये तुम्हें वैसा पूछेंगे। तुम्हें ऐसा लाइक इंट 8 या 16 या 32 ऐसा नहीं बोलेंगे वो कुछ, ये तुम बताओगे कि उसकी जो स्टार्टिंग एंड इनिशियल कैरेक्टर कितना वो रखता है,
यार बट पढ़ाई क्यों चालू है यार? ये मेरे को अल्फा पूछ रहा है बे। ये मैंने नहीं चालू किया, वो मेरे को पूछ रहा है, मैं बता रहा हूँ उसको। नॉर्मली अगर तुम्हें ऐसा इंट की बाइट साइज पूछा तो वो फार है। वो फार क्या बोल रहा मैं, 4 रहती है वो नॉर्मली, 4 बाइट्स की। तो वो 4 to 8 मोस्टली। चले फिर चलता पढ़ने में। वाइबा में 0 लग गए भाई। मेरा तो गो गया ऑनलाइन में। सही है। अरे चिल करो गाइस, 12 बोर्ड्स में 60। ये 12 बोर्ड्स में, अरे नहीं ये इंजीनियरिंग वाला पूछ रहा है शायद मुझे। अरे चिल करो गाइस, 12 बोर्ड्स में 60% से ज़्यादा लाओ और एमएससी सीईटी में 85% लाओ। कम 25 ड्रीम कॉलेज मिल जाता है। बोर्ड्स का स्ट्रेस लोगे तो बोर्ड्स भी नहीं होगा और एमएसटी सीईटी भी नहीं। जेई के लिए एक या ब्रेक लेना पड़ेगा। नहीं, नो नीड। क्या कर रहा है तू? तेरे को क्या करना है आगे जाके? एंड्रो सच में बता मेरे को, क्या है तेरा इनिशियल से? मास्टर्स विस्टर्स करना है आगे जाके? लाइक इंजीनियरिंग करेगा, मास्टर्स करेगा, क्या करेगा तू? मतलब इंजीनियरिंग के बाद तो मास्टर्स करेगा, और तेरा ड्रीम क्या है वो बता। कुछ नहीं आता लिटरली। अरे पढ़ ले, बेसिक्स तो पढ़ ले, सी के सारे बेसिक्स पढ़ ले। वाइवा क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस गूगल पे मिल जाएंगे, वो कर ले। इंजीनियरिंग कर रहा है ना तू, प्रैक्टिकल का ये खोल, उसमें तेरे को मिल जाएगा आधे। कुछ लेने के फायर एम्पर गॉट फायर्ड अप। इस बारे में तो मैं ऑफ कोर्स मैं प्रेमोस कितने हैं दिखा। सूर्यांश वाले फायर एम्पर को रिप्लाई किया था। अच्छा कौन जेई का ब्रेक ले रहा है? एंडर तू जेई देगा जी? अच्छा एक लिया ब्रेक भाई, कुछ नहीं। जेई इसके तुम्हें जेई तुम कितना भी पढ़ लो, अगर तुम बहुत ही अच्छे हो तो तुम्हें मार्क्स, तो मैं बोल सकता हूँ कि हाँ सही है, बट आई विल नॉट रिकमेंड किसी को भी। मैं लाइक तुम्हारे पे डिपेंड कि तुम्हें आईआईटी करना है या जो फलाना ढमकाना वाले कॉलेज में जाना है तो जाओ। नॉर्मली किसी भी लाइक कॉलेज से करो, सिखाएंगे सेम ही। तुम लोग को सीखना पड़ता है इंजीनियरिंग में आके, इंजीनियरिंग में कोई नहीं तुमको सिखाता कि ये करो वो करो। तो सीईटी दो चुपचाप, कौन से भी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओ। वैसे भी लेक्चर कोई घंटा नहीं कोई लेक्चर बैठेगा। अटेंडेंस के लिए 75%, एक वीक में बैठो 75% हो जाता है। मेरे कॉलेज में तो 75% हो जाता था अगर मैं एक वीक में पूरा बैठा कॉलेज में। उसके बाद मैं पूरा 3 वीक गायब था, मतलब 1 महीने का। उसके बाद प्रैक्टिकल्स तो अटेंड करो, बिकॉज प्रैक्टिकल्स तुम अटेंड करोगे तो वो अच्छा रहता है, सो दैट तुम्हारे वाइवा के टाइम तुम लोग को वो बचा सके। एंड नॉर्मली अगर घर पे जा रहे हो पूरा दिन तो चिल करो बाय द। हाँ प्रेमो सॉरी प्रेमो, लाइक चिल करो, बट इन दी एंड अपने स्किल सेट्स भी ये करो। लाइक फॉर एग्जांपल जो भी कोडिंग लैंग्वेज तुम लोग लाइक जावा या सी, जावा तो अभी बहुत डिमांडिंग है, तो जावा सीख रहे हो तो जावा सीखो। जावा में और एडवांस में जावा, एंगुलर JS, देन रिएक्ट, ये सब तुम लोग सीख सकते हो। सीखो तो तुम्हें लाइक इंटरव्यू के टाइम ईजी पड़ेगा ये सब। नहीं तो, पर ऐसा नहीं बोलूँगा कि पूरे इंजीनियरिंग में यही करो। एंजॉय भी करो, जहाँ घूमने जाना है वहाँ जाओ, जिसके साथ मूवी देखना है मूवी देखो, पे कहीं जा रहे हो जाओ। घर पे जाके लाइक तुम्हारे इस पे लाइक कोडिंग पे तो ध्यान ही दो, एंड नॉर्मल सब्जेक्ट्स पे लाइक पास हो गए तो भी चलेगा। किधर गए सब प्रेमोस? अरे राइडन के इस पे। या फिर तुझे पाइथन आता है? मुझे अभी थोड़ा मतलब लाइक बेसिक्स आता है पाइथन का, उतना एडवांस लेवल पे नहीं आता पाइथन, बट हाँ मतलब मालूम है, मैं कोड समझ सकता हूँ। नॉर्मली मेरा सीन ऐसा रहता है कि मैं पूरा कोड कभी स्क्रैच से नहीं लिखता। मुझे मालूम है कोड कर क्या रहा है और मुझे कहाँ एडिट करना है, ये तो मुझे आराम से मालूम है, तो कोड समझ में आता है। कोड समझना सबसे पहले ये है। 90% में से लोग कोड कभी लिखते नहीं, 10% कोडर्स ऐसे जो स्क्रैच से लिखते हैं। स्क्रैच से लिखना मतलब तेरा पूरा नॉलेज इतना रहना चाहिए। मैं तो लाइक मैं हमेशा बोल देता हूँ मेरा इतना नहीं है, मेरे कभी इतनी लाइक प्रैक्टिस है बट नहीं। हाँ अगर तुम लोग को लाइक प्रैक्टिस करनी है तो द बेस्ट इज लाइक टू गो ऑन कोडिंग गेम। कोडिंग गेम इज लाइक गुड फॉर योर
कोडिंग गेम में लाइक बहुत प्रैक्टिस हो जाता है कोडिंग स्किल्स के। कोडिंग गेम एंड हैकर रैंक मैंने बहुत चुमतियागिरी की है। मैंने कभी हैकर रैंक एंड कोडिंग गेम में इतना ध्यान नहीं दिया। कोडिंग गेम में है बट कोडिंग में ऐसा है कि बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। अगर तेरे लाइक बेसिक्स क्लियर नहीं रहेंगे ना तो लमड़े तो लग ही जाएंगे। मैं तो सोच रहा हूँ कि स्टार्टअप ही कर लूँ। पाइथन में तो डेटा साइंटिस्ट में जाएगा क्या? एन एनालिस्ट वो मेन है। वो कहा जाता है उस पर, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बिकॉज अगर तू नॉर्मल कंपनी में आएगा ना लाइक पेनक्राफ्ट या नॉर्मली जो डिलीवरी के रहते हैं लाइक ये कोड बनाते हैं या फ्रंट एंड। मेडन दिखा? कौन सा मेडन? राइडन बोल रहा है? ये ऊपर तक है क्यों नहीं है? मेडन मेडन क्या है? क्या मोमोज राइड? क्या मोमोज बेट? मोमोज ठीक है भाई। मोमोज से अच्छा तो मैं भाई इंजीनियरिंग के बाहर मेरे जेरोक्स वाले का ये करता। नहीं, दिल्ली में ऑलरेडी काफ़ी मोमो वाले हैं भाई। जेरोक्स वाले की दुकान खोलूँगा भाई साहब, आराम से चल जाएगा। पूरा तो ये हमारा वहाँ पे ही रहता है, पूरा पैसा मिलेगा वहाँ कसम। ये है मेरा। इसका यार बहुत बढ़ गया, ऐसा ही नहीं लगना मेरे भाई। बाकी दुकान बंद करवा। अरे बंदे तुम लोग हो ना भाई साहब, तुम लोग को लेके आऊँगा। मतलब बाकी सारे मेरे आजू बाजू के जेरोक्स वाले, चाय वाले, इन सबको बंद कर दूंगा मैं। और उनको लाइक उनको बंद करके उनके साथ कोलैब कर लूँगा। उनको बोलूँगा तुम लोग का 40% शेयर मेरा, लाइक 60 तुम्हारा 40 मेरा। चाय वाला, उसके बाद जो पैटिस विटिस वाला रहेगा, ऐसा बाजू बाजू में रखूँगा सबको। एक बड़ा स्टोरी करूँगा कि यहाँ पे सारे इंजीनियर लेके हैंग आउट करेंगे। भाई गेंशिन सेंडेड मी अ स्पेशल केक। आज तेरा बर्थडे है ना, इसके लिए हैप्पी बर्थडे बाय द वे। हाँ तू आजा मेरे साथ, देंगे करवा देंगे मोमो वाले के साथ। मोनोपोली बना भाई, तो मोनोपोली ही तो बनाएंगे ना। या आपसे मोनोपोली हमरी नहीं है, इतना ही है। कौन सा C0 भाई? नहीं मिली मेरे को C1 राइडन। थैंक्स भाई। अरे बस क्या, बाय द वे बॉयज विश कर दो भाई रियलेक्स के हैप्पी बर्थडे है बॉय। बर्थडे विश करो बॉय को। ऐसे छोड़ोगे क्या? पानी? अरे मेरा इनहेलर कहाँ है? डॉक्टर बन जा, दुकान बंद नहीं होगा कभी। अरे ये प्लॉट सही है। डॉक्टर भी बन जाऊंगा, प्लम्बर भी बन जाऊंगा मैं। ये प्लॉट बहुत सही है। ये प्लॉट मेरे को अच्छा लगता है हमेशा। ऐसे प्लॉट में के लिए तो मैं हमेशा भी। ऐसा क्यों म्यूजिक लगा है? अभी कोई चुमतिया बोलेगा ये मोनोपोली वाले गेम क्यों बता हो। Traveler, Paimon, there you are. स्टूडेंट लोन रहो फिर क्या? Nahida, bad news. We just saw the balladeer strolling around in public. Did he escape or? Ah, it's him! He's guarding. Sure enough, you're here. Hello bro, hi Aniket. I am new here, but आपने जो thumbnail लगाई भाग के आया। अच्छा लगा ना तुम्हें? डिस्कॉर्ड ज्वाइन करो, तुम लोग को सॉस मिल जाएगा उसका। 2 साल में भर दूंगा मैं गारंटी। MS के लिए We made a deal, and he's gonna do some investigation in Irminsul for me. थैंक्स भाई लोग, लेट्स पार्टी। चलो भाई पार्टी। भूख लगा है मेरे को, ऐसा मत बोले, भूख लगी है मेरे को। What did you expect? Why do you think Sumeru would keep me around otherwise? Or maybe killing me is all you can think about. But if that's the case, why haven't you done it already? अरे नहीं करेंगे भाई। Don't flatter yourself. It was... Nahida said there's still some mysteries in you to figure out. Ah, भाई के so if it were up काम to है you, तुमने। you'd finish the job? भाई का Guess I काम है। had you नहीं नहीं all नहीं, wrong. ये मैं नहीं There लिया I था, was thinking ये you मैं were नहीं just लगा था, getting रूल ने नहीं cold दिया मेरे को। feet.
रूल कभी-कभी देता है मुझे तो मैं उसके लगाता हूँ और उसको अप्रिशिएट भी करता हूँ। ये मैंने ही लगाया था। Not a good start. Could I ask you all to please calm down? But Paimon's worried about you, Nahida. Don't let him trick you. हाँ। It's not every day you see people questioning the God of Wisdom's judgment. Just when you think you've seen it all. Don't you dare try to drive a wedge between us. As long as the terms are भाई ना reasonable, नेम I don't think करना है there's a वंडर को problem तो in उसका making a नाम deal. गिलगामेश रख दो। Even with the volunteer. Well, I for उसको one मैं टट्टो have का no सौदागर reason to रखूंगा। doubt you. अब मेरे पास है नहीं। Considering you even struck a deal with the doctor. Yes, one in which I gained valuable information. You'll come to understand more about that in the fullness of time. The Paladier's power was टट्टो का all but सौदागर सही completely रहेगा वे इसके spent लिए after नाम। your battle. स्टूडेंट He's लोन no का longer बात कर strong रहा है। enough एक to be a डॉक्टर आराम से strategic मर threat देगा। to us. I am back. That मैं puts गेम him हो in गई quite a फिजिक्स कल। precarious अच्छा सही है सही है। position. अच्छा 3 Plus, आंटी he's a में से former एक ही harbinger आई with है। 2 knowledge आई of है। many तीनों of the आए थे। Vtuber's 2 अभी sensitive है। secrets. वंडर का नाम Being बंटी stuck होगा here और in कुछ नहीं। Sumeru could make him a sitting duck, depending on how the Fatui plan to नहीं respond. टट्टो के सौदागर सही लगता Wait है। a सही second. लग रहा है मेरे को नाम। क्या Farmer? लगता है? You mean he's not a harbinger anymore? I take no pleasure in saying this, but it seems as if the doctor had no intention of welcoming back a loser. So tossed you out like a trash. Sometimes it's you using them, other times सनी it's को भी them एक using नाम you. दे। सनी Most को क्या human नाम दे? घास relationships का are सौदागर this उसका नाम सही way. है। Certainly all the stable ones are. That's how it was between me and the Fatui, and also between each of the Harbingers. So as long as you have some value to offer, nobody will ever abandon you. But after recent events, even I have to admit that I'm not worth quite what I used to be. टट्टे रखूंगा इसका नाम टट्टे। Well, if the Fatui are gonna reevaluate my एंड्रेसवा utility, तात्या रखा उसका नाम। I need to have a backup plan for myself. As we Andrew, discussed, I don't like causing you harm to living fucking beings. legend. And you said you need protection. So, why not join forces with us? I मैं think these मेरे two को have इसका made their नाम objection to that idea मेरे को fairly इसका नाम मिल clear, गया। don't you? हमारे And they're your हमरे friends. को आंटी दे रखा So है I सनी guess के you'll लिए be siding with them. भी। Yeah, अब एंड्रो को एंड्रो उसका नाम ऐसा रखूंगा ना मैं, listen to him. तू खुश हो जाएगा। Then let's put that discussion to the side for now. We still have time. Today can be a trial वंडरर run. नीड प्रोटेक्शन। Where we go from here will depend on how well we manage to cooperate today. All right, then I'll do what we agreed. Good. Go now and keep in touch. Nihira, are you? मैं कल you मिला serious था about एंड्रो this? त्रिपाठी से। वो Yes. मुझसे पूछा व्हाट कलर इज I योर have my बलीनो। reasons for this decision. In fact, का I'm largely doing it for your benefit. लाल लाल बोल। मैंने जेल बर्ड रखा। Yes. जेल बर्ड रखा As I है। told you once before, there's नहीं information मैं about मैं your लिखूंगा twin in लीजा का Irminsul. 14। Oh yeah. इतने मत रखना, Actually, कोई that's रिपोर्ट the मारेगा whole reason गेंशिन we वाली came to बैन see you today. बैन मार So देंगे। you have an update on that? Mm-hmm. You may remember me mentioning that the मैं Fatui रुकूंगा had लीजा not का 14। included your twin's details in the लीजा का descender 14। category. This is an extremely important point. कौन रिपोर्ट मारेगा? It's इसकी possible माँ का that the Fatui have इसमें other हिम्मत है। information that even I don't know about. And since the Balladeer used to be one of them, ये नाम सही he'll be रखता better है। acquainted क्या with बोलता this है एंड्रो? information than I am. He was granted the power to connect with Irminsul when he almost became the god of a new era. Even though he no longer has the Gnosis, some traces of its power remain in him. लगता है लीजा को He can still connect. The amount of information in Irminsul is vast beyond description. लगा था लीजा को Sifting through all रखेगा of it जब तू without एंड्रो knowing what बोला। to look for हाँ would तो take वही too तो बोला मैं। long, even for me. कैसे So I आया का asked कब the आएगी? Balladeer to search in आएगा Irminsul अब for मालूम नहीं any भाई। information about the Descenders. He's more familiar with this kind of information and should be able to find लीजा it का more 14 बहुत quickly. सही रहेगा। What if he lies to you? Exactly! Or what if... Paimon just doesn't trust him. He's treated us as enemies 5 every बैनर time तो we run भूल into him. जाओ कहा ना। I understand. But sometimes, everything is dictated by which side you're on. How things will go in the future depends on what information he brings back. And Traveler,
I know what your heart desires most of all. काना लीजा का क्या Our कनेक्शन minds have साले connected ये तो several ऐसी times बात हो गई before. कि काजुआ बेडो का There's a corner of नाजायज your heart हस्बैंड reserved for an intense longing. तो क्यों A नहीं feeling of being all alone in the dark, searching for the one candle whose light still burns. मैं क्या मैं As तो तेरे को Sumeru's ट्रोल कर रहा हूँ मेरे को It is घंटा फर्क my नहीं पड़ता responsibility तुझे ही to मालूम be है on guard against the मैं तो Balladeer. रेडन का 14 लिखने वाला As था someone who counts बट तूने you as बाद a में याद friend, कर दिया I कि want to do एंड्रो something for you. लीजा का If 14 क्यों नहीं this रखूं deal with the Balladeer can give you the answers you've been longing to find, then it's worth it. It's my pleasure, really. You're Sumeru's hero. You've more than earned it. Paimon's still worried about this idea. बेडो Is मैन there arguing anything with we can do लीजा to मैन help? मी शाओ I मैन was gonna contact you about that, but then you suddenly showed up on your own accord. Seems like we have a telepathic connection. हैं In fact, I was going to ask you to supervise the Balladeer on my behalf while he carries out the task I assigned. तो Even फिर though सारे he तो only गए has a हैं fraction मैं of भी his यही full बोलने वाला था power, इसको मैं शांत बैठा that's बिकॉज still a fraction of a former टीम पे harbinger. नहीं बोलूंगा कुछ If you could तू बोल accompany दिया था him, ये it would put my mind at ease. Of course, I'll be there to help guide you through Irminsul from the outside. Great. लमो Thank you. Prepare yourselves. I'm going to transport you into Irminsul. सही है हो गया ट्रिगर Wow, it looks pretty different here compared to last time. तो करे नाइदा में नहीं है कोई The colors are gentler. देख रहे Guess that must हो be देख रहे हो because बिनोद Sumeru's at peace now. और रेडन के 14 Look कैसे at हो that. Hot on my heels. You know, you didn't have to cut your catch-up short just to keep me company. Oh, but I guess you panicked when you realized that I might enter Irminsul ahead of you. Shut your beak, jailbird. ओह No way a prisoner जेलबर्ड gets to be so smug. वाह 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 I understand that तू तो prisoners have चीची to मैन put है up with नहीं harassment तूने from the पहला जो बोला था guards. बेडो मैन वही But हूँ right मैं now, I'm on temporary release. So maybe you should think about backing off a little. Sounds like a successful rendezvous. I need to be quite clear about something. In a few moments, you'll be entering into the innermost region of Irminsul. It is an environment like no other, and the most important place in all of Sumeru. Unlike anywhere else, Irminsul's inner region consists exclusively of torrents of information. You must put aside your differences and be extremely careful as you navigate your way through. I know there are many grievances between you on both sides, but it is essential that you remain calm after entry. This is as much for your own safety as anything else. Fine, let's call it truce. But only until this mission's over. क्या बोला बे Let's एंड्रो cut each other a little slack, shall we? बंटी We घंटा are going to be traveling together after all. Per my agreement with Lesser Lord Kusanali, I'll be at the फक मेरा front. गेम बंद हो गया It's my job to lead the way and get rid of any obstacles in our मैं path. चेंज कर रहा All अपना you have नाम to do is keep your अपना pretty अपना eyes main to open Raiden and try not to fall behind. क्या You sure are confident. Paimon will give you that. You make it sound like you're even more experienced at adventuring than us. If there are no further objections, or did you need some time to mentally prepare yourselves? Ew! Ugh, the snark on this guy. It's a bit... We can start now. Irminsul access granted. Initiating connection procedure. हैं Is this a small sapling? Oh, darn it! Come on, let's catch up with वैसे him. जी जी ओपी होगी अरे मेरे पास C1 ही है आउच इसका नाम चेंज कब आता है Wow. So this is the inside of Irminsul. साला आधा अबिस लगता है बे Paimon's never seen anything ओके फिर चलता हूँ like मैं this. गुड नाइट गुड नाइट And it feels तो चलो like a मैं विश sacred करता हूँ place. आपको चीची सीसीस Irminsul is मिले अरे closely अरे 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 intertwined with the entirety of Tavat. एंड में Every bit of अच्छा information flowing here means something. Pick your jaws up off the floor. It's time to go. Why is it that Paimon just wants to do the opposite of everything he says? Lesser Lord Kusanali, we will now proceed to the heart of Irminsul.
Can you still sense where the heart of Irminsul is? Yes. Permission to begin searching for information there? Permission granted. Go ahead. Let's अरे क्या go. वो तो कंफर्म्ड है Hey, so अपने कब तो मिलेंगे say we did go running off in here. What are you smirking at? I was just imagining the look on your travel companion's face if you went and got lost. Anything's possible in here. You can't rule anything out. So if you want to पहले तू stay एक safe, लड़के का your साथ best करना option चाहता is to था stick अब तू close to me. 3000 साल की बूढ़ी के साथ करना चाहता है उधर जा साले नईदा पीसी हाँ ना नईदा पीसी है माँ कसम पूरा कंप्यूटराइज्ड है These sapling things have spread out. and Those are all packets of information from inside Irminsul. Be careful not to touch them. टच किया तो क्या करेगा हाँ साले उसको टच करूंगा मैं तो बच्चा हूँ जो नहीं करेंगे हम जो नहीं बोलता वही करूंगा मैं करूंगा टच डरते हैं कमा के यार मैं टच नहीं किया वो पहले ही चला It गया looks the same in every direction. साला बलादिर को देख के सब भाग जाते हैं सैपलिंग भी भाग जाते हैं और टच No wonder he mentioned about getting lost. Huh. What do you know? He was actually telling the truth. सर मैं तो सोच ही रहा था एफी का मजाक What is it this time? लीजा के बारे में There's a बोला time and तो a मेरे place को to मत lie, मेरे को but this रोस्ट करेगा definitely isn't it. साले मैं तो So why don't you relax your guard a सोच ही little? रहा था एफी का मजाक बेहतर है थोड़ा मेरा मजाक जिस दिन बैन मार दूंगा ना तब मजाक तुम्हारे गोटे में आ जाएगा We're here. What a huge tree! मैंने रूल को वैसे ही पहले ही बोल दिया है सेंटर पर मैं Lesser Lord Kusanali, Good, you made it. Are you ready? ready when you are. हाँ Then please begin. हाँ Preparing to access cognitive currents. Establishing waypoint. The Balladeer's actually doing what Nahida tells him. Guess he must want to stay alive. फर्स्ट एको है The rest is up to you. If you discover anything बोला? at all, be स्कारा sure को to बोल share तेरी it with मम्मी को us. टच करूंगा क्या Will कर do. लेगा Huh. For once, we're the ones with nothing to do. ये तो रेडन का छिलका है बे इसको रेडन का छिलका नाम Paimon, रखेंगे would you like to talk? इस से टेलीविजन Yes. कनेक्शन I've also invited Paimon to join. Huh? What the? We can talk to each other inside our heads? इसको क्यों दिया बे That's part of it. Plus, we're all friends. There's nothing wrong with us talking like this once in a while. Paimon's never tried this before. This is great. So, Paimon's been wanting to ask you something. Don't you think the Balladeer's a bit of a walking contradiction? He's always talking back, but he seems to listen to what you say. अरे इसको वॉइस लाइन क्यों नहीं दिया है माँ कसम ये इतना पैसा लेता है क्या ज्यादा रेड वाइन वेब टेस्ट सो गुड क्या बात कर रहा है भाई हाय शुनकमी वेलकम टू स्ट्रीम सही है yes and he seems to excel As I've told you before, there are still some mysteries for him to resolve. Things that are clear as day to me, but that he has yet to understand. Perhaps today will be the day that he finds some answers. Zeraba's past the betrayals and the other events in Well Amazon. done. Smart and attentive as always. पाइम सब टॉप जी आवाज अरे सब बढ़िया भाई तुम बताओ कैसा है So, you made contact with that part of his mind. Well, it's true. भाई आर्कॉन क्वेस्ट इतना Betrayal लेट turned कर the रहा है Balladeer क्या करो into अब the person अब ये he is बंदा today. सुसाइड करेगा Huh. Paimon's तो नाम क्या रखो भाई रेडन का चिल्का रखो या रेडन का 14 रखो Turns out he can get hurt and angry just like anyone else. Everyone has एक a history, पुत्र Paimon. हाँ अरे Even if you're a puppet created by the Electro Archon. ए पुत्र ए We ran ऐ into two पुत्र रख people at सकता the हूँ मैं Academia annotated to me today talking free there about an essay. Turns out ई आई the पुत्र topic was मतलब about ए the पुत्र Tatara Suna incident. रेडन पुत्र बहुत सही Do you लगेगा know बे anything about that?
If you mean the mysterious events, Raiden Putra. the Kabuki Mono and so on, yes. But ये किसी को hurt नहीं होगा ना I यार know किसी के about all feelings of को that. like Really? Because from what they were saying, it sounded like lots अरे of Katara's अरे history is अरे still सूर्यांश unexplained. And लेकिन most of space the allowed नहीं information है we have now is just from people filling the gaps with their ऐ मुट्ठल रख imagination. दूंगा At least that's what मतलब they वो साउंड होगा ऐ मुट्ठल करके बट आई मुट्ठल लिखूंगा Oh, how interesting. like I don't know Raiden Those Putra two लिखा तो managed किसी to को ये deduce नहीं होगा ना quite like a lot through guesswork alone. ऐ का अंडा So लिख the देना guesser नहीं got it right? ऐ मुट्ठल लिखूंगा try to name him ऐ नो मुसु को They guessed Ah, right नहीं, about ये one नहीं। thing. Tatara's ऐसे son नहीं was रखेंगे हम। sabotaged. आई Must आटो be a riveting conversation you three are having. Funny how all the good ones happen when I'm not involved. What makes you think we're talking to each other? लोगों के feelings का माँ Don't का insult me. बहाना You're having a private conversation without me. Obviously, मतलब बोला I था must be ये the topic एक of said एक का conversation. पैसा हाँ समझ गया मैं एक का पैसा नहीं वैसा नहीं लिखूंगा थोड़ा ये होगा सी ऐसा लिखूंगा ये नाम रखेंगे हम मैंने इसका नाम नाज़ोमी रखा है it means hope if you pray for me so I get a phantom skin tomorrow in shop कौन सी phantom skin लेनी मैंने RJX ऑपरेटर ले ली by the way ये रखूंगा मैं ये रखूंगा उसका नाम how is Nami as a name सही है Nozami is also good मैंने तो स्कारा कर रखा है Of कौन सा course you वेरिएंट do. RJX का You लिया can't have मैंने your prisoner knowing ये too much. ऑपरेटर So, मैंने तो इसका नाम रेडन सोरा लिखा है have you found anything yet? क्या लगता है आई मुट्टल कैसे Still लगता है looking. Don't get your hopes up, though. You and your twin come from outside this world. It wouldn't surprise me if there was nothing on वेरिएंट either of कौन you सा है in ओपी का Irminsul वो at all. गोल्डन वाला रखा है मैंने How did you know about that? Didn't Nahida tell you? It's not like we've never met मैंने before. टेस्ट सब्जेक्ट And लिखा anyway, था you're world मस्त famous. लॉक कर दे ये सही It'd है be ना more surprising if I didn't know a few things about you. याद रखियो मैं ये नाम रखने वाला हूँ बिकॉज ये कब खत्म होगा मुझे नहीं मालूम Right now, we have to keep the peace. Big fan. Hi, I'm not Gilgamesh. interested Welcome in stream. creating more I go misery sleep. for Need to myself. study for pre-boards. And All the best for your making cordial exams, by the way. conversation is something I वाला can है। manage. Huh? Wait. अभी है अभी नाम रख अभी आएगा क्या नाम रखना This light. It looks similar to those saplings. What? Anonymous data. Hey, don't you forget the agreement. You have to share it with us. घंटा होने वाला है अभी तो बहुत बचा है वही तो Just wait. Mr. Niwa, are you certain this is worth the Yeah, risk? this is important, this is we important. are talking about Tatara Suna's furnace, after all. It may not pay to act rashly. There's no one else who can enter the furnace. Hi, It has to be me. में सो जा अरे अंश Is that so? Well, since you insist. It's... Whoa! कारा तो पाइमन लाइक चुप कर बहन की आना I have been in Tatara Suna for some time now. You have shown me great hospitality, as has Mikoshi Nagamasa, and indeed, everyone else. Under your leadership, Tatara Suna is a warm, welcoming place. वॉर्म Like बोला a giant village. मेरे को लगा People are वॉर बोल gainfully रहा है employed. Their lives इस have कार का 5 purpose. साल हुआ है हाँ मालूम है They are motivated. As I फ्लैशबैक understand, the Raiden Shogun has, in recent years, eliminated much of the evil that plagued Inazuma. As for Tatara Suna, it was originally established as a means of safely disposing crystal marrow. The forging industry with crystal marrow as a raw material has भाई अभी since सोने जा रहा हूँ flourished, लाइक डन थैंक यू giving रेयांश rise गुड to नाइट generations of तुमने swordsmiths. तूने Some वो फॉग वाला world-renowned, क्वेस्ट किया इनाजुमा का others unknown. फॉग वाला all मुझे मालूम है passing on हाँ their वो ना legacy. वो क्वेस्ट का मुझे सब मालूम है reconnecting server wait what did I just miss did I lost my internet connection अब लाइक किया मैं तो boys is the stream is going on or not bro Genshin down हो गया
ये मेरी स्ट्रीम डाउन हो गई. स्ट्रीम तो चालू है भाई, गेम क्यों बंद हो गया? Did it got glitched out or something? Stream dead. Fuck you. No, the stream is not dead. Bro, don't tell me again. What the hell just happened? Bro, don't tell me like मेरा account hack हो गया. On stream account hack कर दिया क्या माँ कसम. तेरा अकाउंट बैन कर दिया क्या? ऐसा मत बोलो बे. I have been in Tatarasuna for some time now. You under your, as I under the forging skills, blood, dreams. Every smith brought into this trade looks to find their purpose between steel and blade. That is why you accepted the proposal brought to you by myself and Akame. Yes, well, were it not for you coming to Inazuma and happening to make Akame's acquaintance, the two of you never would have joined forces. And he would be the first to admit that there's no way he could have revolutionized our forging process like this on his own. At least not on the same timescale. You allowed Akame to take all the credit for a method that you jointly developed. He sold it to me. And now, every piece of ore here is smelted using the new technique. Even now, you remain one of Tatarasuna's key consultants, working right here alongside us. I believe it is you, sir, who are truly responsible for the changes in our manufacturing and forging methods. कौन सा वो quest बोल रहा है क्या? वो वाला From the fog outset, वाला. I saw much that was commendable in the forging industry of Inazuma, and it has been my great honor to befriend you all. fog वाला quest का मुझे So सब you मालूम say, है. Escher. रू वाली quest ही But बोल is रहा है ना this तू? really the truth? My good sir, Hack की बात what कर do रहा you था. अच्छा mean? अच्छा. I tried to resist thinking it was all connected. Because I अगर didn't कभी want to account hack हुआ speculate. तो. And I didn't want to believe that things could turn out this. What have we gained from adopting your new technology? Ominous black smoke? Mounting Ominous. production problems? Worker fatigue and casualties are up and continuing to rise at an alarming rate. And recently, अगर कभी as account you hack well हुआ know, तो. अच्छा अच्छा. someone died because of that strange filth inside the वो furnace. अच्छा एक तू है एक मैं. We've kept the मैंने truth from खुद को spreading देख रहा हूँ. outside, but still, I suspect you understand it better than I do. None of the people who went out to get help मैं have नहीं come खुद को back. देख रहा हूँ. Now, our mutual friend, the Kabuki Mono, is अब taking the 5 हो golden गए. feather to Narukami ठीक है Island ये to ना seek an रियास audience है. with Shogun. तेरी है. This is our last hope. और भी कोई तो But that रहेगा. doesn't faze you, does it, Escher? Nothing does. Otherwise, why would you still be standing there with that smile on your face? I'm just surprised that you finally chose to be so sincere. I'm sure you've been harboring these suspicions for quite some time. Mikoshi Nagamasa may have noticed that there was one common denominator among all these events. Namely you, Escher. But Mr. Mikoshi is more cautious than I. He does things by the book. After all, Nagamasa is the adopted son of Mikoshi Torichio, the yokai struck down by the Shogun's own hand. If he truly seeks to redeem his family's honor, an abundance of caution is well advised. You're well informed on the subtleties of his situation मेरे for a दोस्त को mechanic कोविड all हो the way गया from और मैं Fontaine. उससे 2 दिन पहले Are मिला you था. sure you're not a little भाई overqualified? टेक केयर. Why, Test Mr. करवा ले. Miwa, are you symptoms suggesting I दिखे find a तो. job as a diplomat? Sadly, I am so very attached to my craft. Enough, Escher. I'm here because an evil force is raging inside the furnace. And someone needs to take your new device inside the high-risk zone so we can absorb it and put an ये end मैंने to the पढ़ लिया problem. सूर्यांश ने क्या लिखा है. I'm in charge here. And I'm about to take some responsibility Maybe. and head inside. Probably to my death. Maybe will be remembered. But what about you? Maybe not. What are you still doing here? Judging from the look in your eyes, you don't seem to trust me. Drop the act! We're past that now. Whoever you are, it looks like your plan to destroy Tatarasuna has worked. I just want to know what you're still doing here. What's left? Don't you have all your answers by now?
Honestly, I'm just waiting for the right moment. A moment like this, where you finish talking and I stop you from entering the furnace. You... अरे हाँ bro. You're a little smarter than I initially gave you credit for. I ये thought क्या I'd मर्डर है disguise ये? myself exceptionally well, at least for the first few days. But to my surprise, you had your people look into my background right from the start. It's a long journey from Inazuma to Fontaine, but that didn't stop them. Eventually, they managed to confirm that Escher was an alias, and that I was not from Fontaine at all. And yet, despite all of that, you still fail to realize my true identity. Daughter. And what I से seek अच्छा तो in CID में दिखाते Tatarasuna. हैं हाँ ना. Did you really think you would be able to see through my plan? क्या बोला ना मैं daughter ही है You साला kill बड़ा. me. There's no one who can get inside the furnace. So you're really going to destroy this place? Is that it? Oh, but you're quite wrong. There is one other person. Some may not see him as a person, but you told him yourself. You're not a puppet. You're a human. Daughter है You're ये. just Doctor. missing a Doctor. heart. Daughter. DAUGSTER. Whoever you're Daughter. working for won't get away with this. They'll be found out. But this makes no sense. It's no trouble at all. Hey, what's your Patience keyboard? is I have a virtue normal which keyboard. I have bro. in abundance. Normal company keyboard. This is I all don't even part know of the a name. carefully controlled experiment. If you must know, German, I'm it happy says to divulge German. my true identity. But it's not I'm a German. Fatui Like a company name is harbinger. German. Call me I save. the Doctor. Shut up. Fatui? Who? Your What do you daughter, not want? doctor. Just to create a minor inconvenience for your nation. That's it? That's why you gave us your cursed technology? Just to let loose the evil energy from the crystal marrow? Look how even the righteous soul is filled with venom when faced with its demise. My device functions precisely as you say. It is the only chance you have of preventing a catastrophe and keeping the truth from the outside world. However, I did not make it with you in my... It is easier for a person to be possessed by evil spirits when they are filled with hate. So give in to your fury. I want to see what happens when a malevolent heart is placed into an unsuspecting puppet. What the Make fuck? no mistake, even without you, that pure, innocent puppet would only end up being used by someone else instead. What other reason would a human have for befriending one who is not of our kind? अरे क्या मर्डर है माँ कसम कुछ लग ही नहीं रहा. If you give him my heart, tell him that both Nagamasa and I see him as one of us. He has nothing to prove to anyone. Because not everyone just wants to use other people. The only ones who think like that are people like you. What a beautiful way to see the world. इससे अच्छा मर्डर almost माइनक्राफ्ट makes me एनिमेशन feel a में little बनवाते हैं ये guilty. लोग. हाँ ना यार. Then out of respect for you, I shall redefine myself. Think of me as a monster or a demon, if you wish. At least this way your death is not a consequence of your own folly turning you into an easy target. You simply lost to something more powerful than you could ever hope to defeat. I say, Mr. Niwa, let's see what happens. Will your puppet friend become a human? No, that will prove quite impossible. Mr. Niwa, already dead. What a pity.
Jester, I have completed the task you gave me, creating a gap and infiltrating Inazuma's inner workings. Monster name ye monsters or daughter? Daughter! It's daughter! I'd like to introduce a puppet to you. If he proves useful, let's make him our newest comrade. And if not, ये second रहेगा जो मरेगा let's turn मेरे को him लगता to है dust. जैसे like सिनोरा मरी थी ना जैसा ये डॉटर भी मरेगा ये मरेगा ही तो स्कारा मुझे से हाथ से मरेगा या किसी के और के हाथ से मरेगा वो मरेगा तो है Hey, are you alright? Dottore. ये मरा ना मेरे को मजा आया Dottore. भाई पागल हो गया ये he lost it Good. Good. Was that the doctor? Did he turn into a mechanic from Fontaine? But why did we see things from his perspective? डॉक्टर जब मरेगा तब मजा When आएगा I touched the doctor to confirm whether he'd eliminated all his segments, I read this memory in his mind. You have to admit, it must be the truth. Maybe so. But it means nothing. Does it? But this memory shows that Niwa didn't betray you. He never meant for you to be the one to take the device into the furnace. You know very well what that means. Even more so than I. समझ गया वो Betrayal never happened. It exists only in his imagination. But where does this leave him? Give him some space. He looks really mad. We need to give him some time to process his emotions. What's I'm still cutscene है? confused about the Cutscene Katara देखना. Suna incident. So the doctor was behind it, but why has that gotten him so worked up? Nobody has ever deceived you like that, Paimon. It's natural that you find it difficult to understand. Perhaps he needed to learn this someday. So now you have the complete picture. Katsuragi took the Kabuki Mono to live with the people of Tatarasuna. Later, the doctor showed up, disguised as the mechanic from Fontaine. And that's when the trouble began. It was all a horrific experiment planned by the doctor. Everything he did was just to plant seeds of disaster in Inazuma that would bear fruit in the future. वो तो होने से All the बचा unwitting मतलब participants in the doctor's experiment. ट्रैवलर को बोल पाइमन को लात मारे फिर पता लगेगा धोखा क्या होता है हाँ ना को पानी में डाल दो उसने उसको तैरना नहीं आता And handed it to the balladeer. The load was far beyond what he expected, but the balladeer survived. He left, the mechanic answered. Niwa fled fuck. this place for fear of punishment, but he left you a gift. He said it's the one thing that you've been looking for. He took it straight from the chest of one of his innocent servants. The mechanic removed the withered heart from the device as he spoke. और बेड साथ आना The balladeer was stunned that such unthinkable cruelty had brought him the thing he'd been longing for his entire life. A heart acquired through cold-blooded murder is a cursed thing, but it had protected him from the filth. He thought Niwa had completely betrayed him, and yet this very betrayal had ensured his survival. Overwhelmed with anger and sorrow, the balladeer threw the heart to the ground and left Tatarasuna without Ooh, looking back. that's sad. Holy moly. So the doctor killed an innocent man and pinned everything on the victim? That's terrible. Being betrayed and abandoned by a close one is sure to cause great resentment. Now we are taking revenge on the Raiden Shogun 100 years ago. Now we know what was behind his decision to take revenge on the Raiden Shogun 100 years ago. लात मार के स्कारा को अबिस में गिरा दो भाई उसने हार्ट फेंक दिया But it doesn't mean that vengeance was the right decision. Yes. Only if he understands this can he choose a new path forward. Let's see Dottore, you brazen-faced... Niwa didn't run from justice. You killed him. you piece of shit.
अब मुझे क्या करना है? ऐसे ही खड़ा रहना तो मैं ऐसे ही खड़ा रहता. Shall we see how he's doing? Hey, you alright? Vengeance evil के तरह के बोल रहा है ये. That's a scary expression. Are you worried about me? If we didn't have such a history, I'd almost think that qualifies me to be your friend. We just want to make sure this doesn't affect the It plan. won't. I'll keep my end of the deal. Hey, are you investigating the stuff we want to know about? That's why we're here. But unfortunately, there's no information about the Descenders in Irminsul. Even if you can't find anything, that seems to confirm it. Irminsul does not keep records on the Descenders. Anyone who comes from beyond this world is not counted as part of Teyvat. Oh, does that mean we have to leave empty-handed? Unexpected, but still, thank you. Don't thank me just yet. You look really upset. Well, since Irminsul was a dead end, I guess I can share some other info that might interest you. Even Raiden निकाल गया. अच्छा है और चलेगा ना क्यों नहीं? C2 अच्छा है by the way. But hi Sovik, welcome stream. C2 is always better than C1. Huh? About what? The reason why there are records about your sister in Irminsul. It might have something to do with Conria. Apparently, Conria was her first destination when she arrived in this world. Someone had tampered this information. Plus, she only came to this world because the heavens responded to the summoning. The heavens responded? The jester told me this himself. You can take his word on this. He was a royal mage in Conria, and lived with your sister for a time. I don't know the details. It's up to you whether you want to believe me. All I can say is, I wouldn't lie to you about this. Did you get all that, Lesser Lord Kusanali? Fuck Caesar से उंगली पे कट लग गया. सही है भाई. सीटों के और ये लन भी चाहिए. अरे कोई बात नहीं, बाद में कभी जाना. C1 मिल गई ना तो सही है. C2 तो आराम से हो जाएगी. Yes. Astonishing news. Does this info count towards my mission? It wasn't from Irminsul, but was it valuable? Very valuable. Good. In that case, I'll take some time for myself now. Huh? What have you done? Lesser Lord Kusanali was right. My power's all but completely spent. Even if I use all of the divine power left in me, I can't sustain this shield for very long. आपका C6 नहीं बे, कुछ नहीं है. मेरा C0 है. I shared a secret with you, and now you owe me. So in return, I'd like you to answer a question for me. Give me your hand. हाथ काटेगा ये, हाथ काटेगा. Can you hear my voice inside your head? No, I can't do anything like that anymore. At most, all I can do is exchange a few words with you. Okay. So tell me, in this world, is it possible to change the past? Oh my god. ये सही लग रहा है मेरे को. भाई बोल दिया. Done. Huh? What the? What happened? Paimon only saw you hold hands for a second. Oh. Nothing. I was just thanking him for helping me. Ooh. Wait, what? Did he just... So long. I suggest you get yourselves out of here quickly. Where are you going? Hey, wait up! Didn't you say not to go running off? Fast reaction time. But I don't think we'll be seeing each other again. From this day forth, the names Balladeer and Kabukimono will cease to exist. Those who died in Tatarasuna because of me वो इधर का हाथ deserve another मांग chance रहा at था life. एक के लिए. Hey, Balladeer! Don't do anything stupid! You know, I never did like insects. Hordes of the puny things swarming together can be a real Bro, you nuisance. can't change the past, right? And I enjoy nothing more than to stamp them out like the pests they are. But if a colony of harmless ants isn't threatening anyone,
I guess they deserve to be left alone. Luckily, everything can be set right. It's time to solve this once and for all. Balladeer! Balladeer! Uh-oh, he disappeared. Come on, we gotta ना find बस him छोटा सा somehow. change आएगा. Yeah, he'll change his outfit from electro to anemo. Is that a cutscene or वो इसकी dress में? Oh no, he's really good. Oh, can you hear me? Nahida! Traveler, Paimon, Balladeer, what happened just now? I was suddenly cut off by some kind of power. It was the Balladeer's fault. He Hello, hi shut Abhishek, out. welcome stream. I didn't think he'd be capable of something like that with so little power left. Did he keep some of his power hidden when he was defeated? Or did he achieve something beyond his abilities? Naida be like, And it हंस लो. took everything he had. आवाज आ, हेलो आवाज आ रही है. वो वाला ये हमारा फोन है, उसमें वो रिचार्ज भरवाया तो रिचार्ज कट जाता है. अरे पैसा कटेगा तुम्हारी माँ की यार, जूझा कटेगा तुम्हारी माँ की यार. मैं वो नहीं बोलूंगा वर्ड. मालूम है ना वो वीडियो, वो चिच्चा मालूम है, वो चिच्चा मालूम है, वो ही है ये. Do something. Where the heck did he go? Ugh, it's all our fault. We were supposed to keep an eye on him. Sorry, Nahida. नाइदा को रिचार्ज की जरूरत ही नहीं पड़ती होगी. नाइदा अरमिनसल को बोलेगी ना, अरमिनसल तो टावर है, ये यहाँ पे टावर नहीं है. Don't be. वो दूसरा It's चचा का not नाम your क्या fault. मालूम नहीं. एक तो जगदीश भगत है, जगदीश Please भगत ने ये let नहीं me बोला. handle this from here. Even though I'm not sure I can solve. We're running out of time. Follow my lead and get out of Irminsul as soon as possible. नाइदा ने टावर का है, मेरे को क्या मालूम. उसका कनेक्शन अरमिनसल से है, अरमिनसल से उसको पावर मिलता है. अभी नहीं, ऐसा पावर नहीं मिलता, बट वो ऐसा कनेक्शन करती है सब. अरमिनसल तो ट्री है और उसकी पावर्स ही ऐसी है. अपूर्ण भगवान, वो भगवान है. कटसीन, And we're at... कटसीन नहीं है. This is an emergency. I'll have to ask you to stay here for now. Everything's arranged, and nobody will disturb you. I'm sorry, but this isn't something I need your help with. An emergency? How bad is it? Nahida, will you be okay? Don't worry. If my assessment is correct, though there may be some minor रियाज एंड चेरी से disturbances, it और won't lead लॉ to a लिखने आते हैं disaster. सब. वो ज़्यादा बात नहीं Please करते. rest and recover अगर your कभी strength here until I say like it's safe. मैं नहीं रहूँगा और मैंने इसको कुछ काम दिया रहेगा ना, तो आई गेस सिर्फ रिया से संभालेगी वो, और कोई ना संभालेगा. कोई नहीं संभालेगी. चेरी का तो नहीं मालूम मुझे. चेरी भी बहुत कम बात करती है. ये बहुत साइलेंट व्यूअर्स है, मैं इनको लाइक बहुत साल से पहचानता हूँ. Her voice has gone. अरे ऑटो पे नहीं रखा. Paimon can't shake the feeling that something really big has happened. What do you think the Balladeer meant? And why did he suddenly grab onto you before? Paimon doesn't remember greater lore, Rukadevata, and the blessing. What? Skip the part about for now and focus on the Balladeer. He wants to change the past? But surely that's impossible! Yeah, Flux कौन है? Flux कौन है? I don't know. Right! You can't just rewrite history! Darling, I can give timeout and ban if you want. Already अरे in नहीं real नहीं, बस life. क्या और करो. ऑटो पे जल्दी जल्दी. पढ़ाई नहीं चाहता मैं, पढ़ ही नहीं रहा था, मैं पानी पी रहा था. It's like, imagine Paimon drank all the water in this inn. Even if no one was there to see it, Paimon would sure as heck remember drinking it. So, why does Paimon still have a bad feeling about this? Paimon can't help but feel scared about what he might do. जा रहे पढ़ाई कर. पढ़ाई नहीं किया तो चल मारे यहाँ पे. Paimon's so confused.
रियाज वापस साइलेंट हो जा। Paimon. Sorry. Paimon accidentally... It's the Balladeer's fault for causing Paimon all this mental stress. But erasing yourself from history? It's unthinkable. Is that really possible in Irminsul? Yes. That's what has happened. Uh-oh. Paimon's head is overheating from trying to understand what he's up to. अरे And it's PC still not working. तुम्हारा ब्रेन के प्रोसेसर है क्या जो हीट हो रहा है? Paimon's had it with that little brat. He's been nothing but trouble ever since we met him. There's no way he'll actually तू भी तो वही है। succeed, right? Otherwise, won't everyone who's connected to him be affected too? Yes. To affect everyone with the connection to the Raiden Gokaden Kazuha Ayaka Ayato. This means they'll disappear. There's nothing we can do about it at this point. Hey, चल बाय। have you कल got उठना any ideas on what we should do उठ next? कर पढ़ाई करेगा। सही है। Seems like now there's nothing left for us I to mean, do like, but to go to sleep. तुमने But हमरे को समझा क्या है? I'm still so worried. Paimon won't be able to sleep a wink tonight. क्या? So, how about we list all our favorite foods to take our mind. All right, Well- Paimon will start. First dish. Andrean chili chicken. Almond. Oh. Also, Adeptus Temptation, golden shrimp. Okay, it's a cutscene time. Or else maybe not. पाइमन ही सो गई नूब। What was Paimon supposed to be doing just now? Paimon was, talking? Huh. Paimon suddenly can't remember what she was talking about. The ballad, is that a food too? Ooh! Huh. Weird name, though. Ooh! What's wrong? Your eyes are like saucers. Was it something Paimon said? So, the Balladeer. Is that someone's name? 'Cause it sounds like a nickname or something. Greater Lord. Okay, sure. Where are we going? Bro, अगर कुसनाली भी भूल गई ना तो खत्म। Huh? Fine by Paimon, but is everything okay? You're acting like this is an emergency. ग्रेटर लॉर्ड माफिक हो रहा है ये तो। हाँ भूल गई वो। ऑफ कोर्स मैंने ये नहीं देखा था स्पॉइलर केस में। अरे मैंने देखा है रे तो इसके लिए मुझे अभी इतना याद नहीं है कुछ चीजें तो इसके लिए मैं ये हो रहा want to था trade tactics, I'm always ready. जस्ट अ गैस अब क्या नहीं मैं झूठ क्यों बोलूंगा मैंने पहले ही बोला था Amanoma Smithy. Ah, it's been a while. Of course. Go ahead.
Oh. Now there's a question I wasn't expecting. Very well. I'll tell you what I know once more. The once renowned Raiden Gokuden, comprised of 5 branches. Amenoma, Futsu, Ishin, Hyakume, and Senju. Senju. The art of forging practiced by these 5 clans was first taught to them personally by the almighty Shogun. Over time, the 5 branches diverged from one another as generations of bladesmiths honed and perfected their craft until they Raiden पहले became smithing का काम 5 करती थी. distinct traditions. Most of the great swordsmith clans of old have since fallen into decline, One Piece कहाँ and for a पहुँचा? long time, 207. only the पहले Amenoma कंप्लीट किया branch मैंने वो. kept its art alive. But fortunately, Kaedehara Kazuha recently returned to Inazuma and took up the mantle of the Ishin art. Now, 2 clans remain of the original Gokuden 5. If my memory serves me right, you yourself were present when he forged the Ishin blade. Oh, yeah, we were! We learned a bit about the decline of the Raiden Gokuden then, too. It seems like such a shame. That, my friends, is a tragic tale indeed. In fact, this was not made known to me for most of my life. 426 पे All these years, आके stop हो गया. I knew of March those के great बाद. clans' सही है. demise, but never the के बारे में cause. बात कर रहा है. हाँ हाँ. Only recently, when the question was on my mind, did I ask Kaedehara Kazuha about this. He told me that, as we are both heirs to a branch of the Raiden Gokuden, it was right that I should know the truth. There is no harm in telling you, but the Raiden Gokuden were the targets of a murderous rampage by a vengeful bladesmith. Vengeful? What? 400 years ago, so I'm told, there was a catastrophic malfunction in Tatarasuna's furnace. One brave swordsmith heard the commotion and chose not to flee, but he rushed to the scene, hoping to prevent a disaster. Tatarasuna was home to a state-of-the-art forging and smelting operation in that day, and overseeing it was the armory officer. His surname was Niwa, though he had family ties to the Kaedehara clan. Knowing that they had just one chance to save countless lives, Mr. Niwa and the swordsmith leaped together into the furnace. The furnace quickly stabilized, but What? neither of them made it out. The smith's death, though heroic, dealt a devastating blow to his family's fortunes. His orphaned son was left to fend for himself, and grew up deeply resentful at the world. In his heart, the whole of Inazuma was culpable in his tragedy. अरे ये तो हक दिया. He hated ये the क्या almighty ending हो गई? Shogun for her apparent indifference towards his father's death, and he hated everyone who had done nothing to try and save him. Powerless and destitute, the तो only डर लग रहा है legacy he पता had to नहीं pass क्या on होगा to कल. his अरे कुछ नहीं children होगा, हो जाएगा. was his hatred. Generation after generation bore this grudge, living in utter misery. Alas, मेरा मांगा था कैश अब. if only the story could have अभी ended तो there. मरा वो जिससे सगारा But बचाने की 100 कोशिश कर years रहा था. क्या ago, फायदा? the then head of this family reached the end of his wits. He could bear their fate no longer, ये ending है without and बता. yet he could do nothing to change it. Finally, he made a drastic decision to take revenge on the Raiden Gokuden. In doing so, he sought to vent his pent up anger and shake the very foundations of Inazuma's forging industry. In his fury, he murdered indiscriminately, अल्फा हनुमान killing चालीसा even पढ़ना bladesmiths जाए from the हनुमान Hyakume clan which he belonged to. बोल के चला जाइयो. His goal was absolute, बोलने. the devastation of all of the Raiden Gokuden. But when he came to the Kaedehara and Kamisato clans, his killing spree came to an abrupt end. He failed to catch them unawares. They fought back fiercely, and they did not spare his life. ये That is क्या हो why गया? the Kaedehara clan and their Ishin art survived that day. I suppose they were the lucky ones, under the dire circumstances.
Was there anything else you wanted to ask? Kazuha? Why, yes. Just yesterday, in fact. My pleasure. Don't tell Paimon. There are other places you want to visit too, right? On to the next stop! Lead the way! भाई क्या सेंस करता है इस बात पे गैम्बल और बनता है? क्या सेंस है भाई इस स्टोरी का पूरा? मतलब ठीक है ये जो करने गया है, बट कुछ जो पास्ट के स्टोरीज और इसका कुछ तो मैच रहना चाहिए। देखते हैं, एक मेरे को कुछ तो बताना है जो मैं थी गैम्बल और का। Traveler, it's been a while. बाद में करता If you're हूँ। looking for the commissioner and Miss Kamisato, I'm afraid your timing is unfortunate. They're not here right now. Are they out on business? The commissioner is out on business, and Miss Kamisato is standing in for some meetings in the commissioner's place. If it's Remote nahi hai urgent, re. you're welcome to wait inside until they get back. What do you think? Shall we go in? If it were anyone else, I couldn't allow it. But seeing as you're so close with the commissioner and Miss Kamisato, अरे साला है वो। I think it should be okay. We'll be heading in then. Points. Hello, dears. Is there something you want to say? Of course, traveler. What would you like to know? Oh, they're both very well indeed. Lately, Miss Kamisato has been ये rather स्टोरी है busy कानूनी लोली attending all बड़ी करने की kinds of कोशिश की, meetings and पर रेडन ने मुझे occasionally paying visits to some बता दी local लोली पे। organizations on the commissioner's अरे यार ये हक behalf. दिया ऐसा लगता है मेरे को। As for देखता है। the commissioner himself, well, you know, busy as ever. That much hasn't changed. So pretty much business as usual on the... Very much. Well, got any more questions? You're very... Miss Kamisato talks about you all the time. ये शादी करेगा She यही seems घर so जमाई बनेगा वो। thrilled to have अरे नहीं you as अच्छा a स्टोरी है सुन friend. लो। And she's always saying यार मुझे तो how ऐसा लगता है talented you कि इसने are सिर्फ and वो how much she admires जो you. लाइक जो बालाडीर से रिलेटेड है ना उसने सिर्फ वही चेंजेस किए हैं, ना कि पूरी इनोजुमा यानी इसकी ग्रेड मार दी। मेरे को लगा कि भाई ये गया तो इसने पूरी गेंद मार दी, मतलब स्टोरी की इनोजुमा की। तो मेरे को कोई इनोजुमा की आधी स्टोरी का पार्ट की सेंस ही नहीं करेगा देन। बट हाँ अभी तादात्सुराना वाला वो जो इसने गोटी कर दिया, आई मीन बीटी कर दिया, तो क्या I ही बोले। must say, many things in Inazuma seem to have taken a turn for the better since you arrived here. So you're not just Miss Kamisato's knight in shining armor. हाँ you देख रहे हो know. तुम। You're a hero to us all. हाँ बालाडीर से रिलेटेड है, बट यू नो इसने सिर्फ अलग, इसने कुछ अलग ही चेंज किया है, इसलिए वो चेक करने आया है। हाँ I mean, हम लोग ने एक क्वेस्ट में आया का इसको मदद किया था, तो मुझे भी वही लगा कि भाई ये वो स्टोरी की गेंद नहीं मार दी ना। whenever the But commissioner मतलब, dines देखते at अब क्या है। home, Toma always joins him. I always find myself at my most relaxed when the commissioner has such a busy schedule that he doesn't always have the chance to take Ow. his meals at home. They say it's because Toma is a much better chef than most. Oh, the commissioner is so fond of home They get to talking about you sometimes too, you know. Always with a very fond tone. The way one would talk about dear old friend. Miss Kamisato occasionally joins them as well. Whenever the whole family gets together and they start ये घर talking, जमाई बनेगा भाई। it's been
many years now since the late Mr. and Mrs. Kamisato passed away. Much has happened इधर की बात होती है in the क्लैन में Kamisato क्या तोमा भी शादी करेगा क्या तोमा गई है क्या As someone who is old and gray enough to have watched their son and daughter grow up, it makes me so happy to see them meet a dependable friend whose company they enjoy. So, in the future, if you ever do have the time, please know you are always very welcome. Wonderful. Paimon likes Paimon's itching to try it. We may just have to invite ourselves around for dinner sometime. Of course. Alright, goodbye for now. Where are we going next? तुम उत्तर Great! लवो Don't worry, we'll see you. All right then. भाई No. Are you two leaving already? Yep. Very well. Safe travels. Goodbye. सेड है यार हाँ वही जाएंगे इसने तो तत्सुरा ना कहीं चेंज किया है स्टोरी मेरे को लगता है और कुछ नहीं चेंज किया उसको सिर्फ लाइक आई गेस वही आउटकम चेंज करना था नावा वाला बट अगेन लग गई फिर तभी भी फिलहाल मेरे यही लाइक मैं यही सोच रहा हूँ ऐसा ही कुछ तो हुआ रहेगा लेट्स सी ये डॉटर है इसको मारूं क्या कोई चेंज नहीं किया But what are we looking for? Do my eyes deceive me, or is that... Xavier? What are you doing? I was in the general area, and now I'm in this specific area. There, that's me. So... We have some questions and thought you might be able to help. Certainly do. I've researched the furnace here in some depth. If there's anything you want to know, just ask away. Like the back of my hand. Make no mistake, I have been here a good many times. Not only that, but I've met people in Inazuma whose families used to live in Tatarasuna years ago. They Oh, well, it's a long story, don't you know? The tale of Tatarasuna starts a long I'm told that its history is one of the most foremost forging and smelting operations in the nation. Goes back around 1,000 years. Still, the furnace has had a couple of serious maintenance issues along the way. A couple? One was just in the last few years, the other was several hundred years ago. A fun fact, I'm not the first Fontaine tech guy to come and work on it either. There was a guy back then too. They say he was a mechanic who consulted on a technology upgrade. It seems like the technological collaboration between our two nations goes back a long way. Okay, it looks like the doctor still sabotaged the furnace, leading to all the insane chaos. Weren't you gonna ask Xavier something about Tatarasuna? Oh, I didn't realize you two were here for a history lesson. Me neither. उंगलियां Paimon doesn't know चाट what's खाता है gotten तो into नहीं this one today. उंगलियां क्यों Feels मतलब like we've been preparing for a history ये exam क्या or सवाल पूछ something. रहा है मुझे What brought this on? Did you just wake up today with a sudden burning desire for Sure, go ahead. A kabuki mono? No, I can't say that I have. I do know the word, Inazuman for those eccentric types who always go around dressed to the nines. Just the sort of person that... But sadly, I've never had the pleasure, nor have I come across anything to do with a kabuki mono where Tatarasuna is concerned. इसने कि खुद का ही नाम नहीं कर दिया लाइक रेटल और रोका दबाता जैसा Of course! Don't mention it. Oh, we're leaving? Oh, you're... Farewell. अरे ये क्या है यार Looks like you got all the information you're looking for. Sure, but what's up with you today? Whatever it is, keep your smile, Spinal Crocodile. No matter what happens, Paimon will always be there for you. क्या फ्लर्ट कर गया क्या Come on, you gotta keep it together. Why don't you grab something to eat? You can't go facing life's challenges on an empty stomach. Alright, let's head off and go meet Nahida. I know कि वही तो
अरे कहना क्या चाहते हो? Hey, it's them! Akaba, Sawada, you're still here? Yo, Kira, once again. Indeed we are. If you have a moment, we'd love for... We have time. What do you... It's the same topic we discussed last... Still looking for more info about Tatarasuna, huh? Should... Unfortunately, we haven't made any real progress. Huh? Oh! चैट पढ़ ली तो बता दे। अडर्स नहीं जाए मैंने पढ़ा वो बतख पालक वेड़ पाइमन लो बालक पालक वेड़ व्हाट ठीक है भाई I presume you'll want to read mine as well. ये बाद में देख लूंगा मैं इसको Well, what do you think? Hey, Traveler. Remember how last time Akaba was saying how he wished he could gather more information about all this? Well... What did you find out? It's a long story. Wow. So many new... Well, well. So it all comes down to one man's desire for revenge. Huh. You heard this from a member of the Amanoma clan, you say? Then I guess it must be true. Ugh. So there's no ghost story here after all. This new... Yes, okay, point taken, you were right. But that doesn't mean I can't carry on... And they're back at it. These guys are really into this. Oh, so sorry. Look at us, prattling on about our projects and ignoring you. Thank you so much for the information. नहीं You're welcome. wish कुछ ना ये ऐलान पे wish सीधा Keep us in the loop if you find out anything else. Will do. अरे कितना भी स्पैम करो मैं नहीं करने वाला नहीं जा रहा मैं C1 राइडन के लिए अब फिलहाल हाईलाइट स्किप कर लियो वो तो करूंगा ही मैं ये ऐलान कंफर्म है तो क्यों ये करो हाय सेंजो We're here. Traveler, Paimon. Ugh, where to start? Paimon hasn't had a moment's rest this whole time. That night, we ended up chatting and chatting until suddenly, the sun was up. The Balladeer? भाई अरे ये कैसे Sounds बोल like some kind of code name. You look troubled. Is there something you need to tell me? Traveler? Hey, what's wrong? You look अरे so यार I am the record keeper there are things that have happened that only I can remember yeah you piece back together the story that was broken and scattered across time. There was one named the Ballade created by the Electrogon. He was a puppet who lived among men. After a series of events in Tatatsuna, the Ballade, thinking he had been thrice betrayed, left in order to roam the world beyond. With no trust for humans and only loathing for the gods, he bore his grudge for years as he grew in strength, then returned to another to take his revenge. He tried in vain to become a deity with a genocide and ended up losing everything.
Finally, he entered Elemental and learned the truth behind his betrayal. Knowing now that his entire life was built on lies, he did the unthinkable in an attempt to reverse his tragic fate. That's quite a story. अरे इसको रुका दिवाता का भी बता देता. This puppet known as the Balladeer erased himself from Irminsul. इस पूरी स्टोरी में एक बार की अपीयरेंस दिखा दे तो और अच्छी लगती स्टोरी. हाँ ना भाई, ये आर्कॉन अगर नहीं, मतलब किसी आर्कॉन को भी नहीं याद है. धत माँ की आगे क्या आर्कॉन है. I remember it a little differently. I don't recall finding anyone inside the machine after we defeated it. Nevertheless, it does make sense. If someone were to successfully erase themselves from Irminsul, the world would change to reflect the new reality. मेरे puppet. So you believe this person मेरे puppet पैदा किया. हाँ ना, मेरे puppet पैदा किया. What? ये कब हुआ? Well, Bye bro, थोड़ा पढ़ के सोना भी है. ठंड में जाना भी है. फिर कल आता उस टाइम भैया. या sure. Yes, theoretically speaking, it is possible to do this. But I'm struggling to imagine the kind of person who would dare go through with it. चलो मैं चलता हूँ. बाय बाय बाय. ए बी लाइक भी पढ़ लेता. आई बी लाइक पूछ की आर्कॉन है ये. इसको एक लाठी मारूंगा पूरा मेरा करेंगे. अरे ये क्या, अगर सारे आर्कॉन भूल जाएंगे कि भाई बलादिर नाम का कोई बंदा था तो भाई क्या फायदा. नहीं बे, ऐसा नहीं होना चाहिए था. ये थोड़ा ये हो गया, फालतूगिरी हो गया. एटलीस्ट इनको तो याद रहना चाहिए था. The traveler comes from a world beyond to that. That's why there's no information about him in Irminsul, and it also explains why any changes ओमन to का Irminsul क्या wouldn't चेंज affect किया him. मालूम है, मैंने नोट नहीं पढ़ा. अरे हाँ, उसका कुछ तो वन वे जो ये देता था ना वो स्मोक्स एंड ऑल, उसका वन वे का कुछ तो कर दिया चेंज ऐसा है. So if there's anyone in the world capable of retaining memories from a past that has been rewritten, it's you. It's quite incredible when you think about it. Paimon's having a hard time understanding this Balladeer guy's motivations. Why did he do? I can only make inferences based on the information we've been given. As for what kind of person he was, only you remember that. हाँ, वॉल पे चिपकाना बंद किया था स्मोक शायद से. I hesitated because of witness greater love because of erase her own existence, but I can't tell neither that. अरे बता दे. To put it another way, I know why the Balladeer. हाँ पर हाँ, अगर उसको रुका देवादा का बता दिया तो of course वो sad हो जाएगी. Why the Balladeer was so sure it wouldn't work, but I can't tell them Something else worrying you? Something that you can't share? He chose such a radical option and yet. It couldn't change the fate of the ones who had died, right? Yes. Once the Balladeer realized he hadn't been betrayed after all, it must have completely changed his Paimon doesn't view know of the anything. She people talks of way too stupid, but Tatarasuna. indeed she is the one who knows Now everything. he Yep. saw them as friends again. अरे इसको अरविंद सोल में लेके जाओ, इसको चिपकाओ वहाँ पे और उसके सर पे हाथ रखो, सारी इन्फॉर्मेशन बाहर आ जाएगी. He couldn't keep hating humans after that. And if he thought there was a chance he could save his old friends, it would be hard not to try. The story makes sense. Every part of it. The Balladeer tried to achieve godhood with the doctor's help. He was unsuccessful, but retained the power to connect with Irminsul. अरे बट वैलोरेंट रैंक क्या है तुम्हारा? S2. अरे बट अगर इसने वो सारा उसने से अगर वही
कदत्सुरा वाला ये कंप्लीट लाइक चेंज किया। अगर ये लोग पहचानते नहीं है तो 3 इसके पिछले वाली आर्कन क्वेस्ट का मतलब ही क्या है? माँ कसम, तो ये लोग लड़े किससे? ये लोग लड़े किससे यार? रुका देवता क्यों आई? रुका देवता क्यों आई? लाइक ये बताने कि हाँ भाई, हाँ भाई, तो मैं मेरे एग्जिस्टेंस ये कर रही हूँ बिकॉज इतना इतना ऐसा सीन हुआ था। भाई फक्ड अप कर दिया क्या ये पूरा स्टोरी इसमें इन लोग ने? अरे इनकी माँ की आग, ये क्या कर दिया इन लोग ने? That power then enabled him to change what was recorded in Irminsul and erase himself, even though he didn't have much strength left. हम लड़े तो लड़े, अब किससे लड़े? हमको ये नहीं याद है, सिर्फ ये चुम दे, मतलब ट्रैवलर को याद है। It just feels so hopeless. इतना भाग भाग के मार रहे थे इतने बड़े वो पावर रेंजर वाले बॉट को। Seems like he got nothing in return. फायदा क्या? उसने वो यही कर दिया, मतलब साइक बीट्स। That's the wrong person. Yeah, he changed the world in many ways, and yet the dead still didn't get a second chance. Those fated were tragic and could not be saved. अभी रुक, plot twist और मस्त है. What else did he want to fight back again? The betrayal in his life, or did he wish he never existed at Please all? wait a moment. I want to check something. Found it. This should be the one. Huh? It turns out that I have a strange way of confirming everything he has told us. What is it? A record from a personal collection. It was tucked away in a corner. You should take a look. ठीक है. The information presented to you in a way that resembles a fairy tale. Okay. Is this a fairy tale? Who wrote it? Bro. I authored this record myself. Huh? You wrote a fairy tale that somehow has something to do with the balladeer? When combined with the traveler's narrative, it's clear that this story is an allegory. Everything in it is a symbol for something else. Hold on. So this record survived from the past? Yes. Any information about the balladeer or the kabuki mono and other records will have been changed. But I wrote this story in a way that means it was left intact. Changing the information in Irminsul changes to that. But Irminsul can't change information that was well hidden in advance. I guess I must have written this story as a backup before the balladeer entered Irminsul. That's incredible! What a great... And sending the traveler into Irminsul with the balladeer must have been a further precaution. I knew he'd remember everything. This story is abstract enough that it still resonates with the present information recorded in Irminsul. But if we connect all the different pieces together, the true story that कि emerges is the one he told us. मतलब एडमिशन को होद दिया भाई, होद दिया पूरा, मतलब समझ जा, मैंने वो वर्ड नहीं यूज करूंगा। There was once a lone monster draped in fox fur. The monster found a family of foxes, joined them, and they became friends. The monster lived with the family day and night, and everyone treated it as one of their own. Once in a while, the monster would take off its fox fur at night and lament to itself as it gazed at its reflection in the water. I am a monstrosity, yet they are too foolish to see it. I pity them. But the monster soon found solace when another came to live among the foxes who was not their kin. A kitten, carved from the wood of a white tree, who had been abandoned by the human. The kitten too wished to become a fox, but its tail was too slender, and it could not grow a coat of richly colored fur. Yet when the other foxes saw this, they spoke words of comfort to the kitten. Even without a tail and fur like ours, you are still one of us. Furious at this happy resolution, the monster lit a fire on the mountain. The terrified animals panicked as the fire spread.
The only way to extinguish the flames was to make a sacrifice. A gray fox stood up and addressed the monster. It said, "You are the cleverest among us. Surely you can help us find a way to..." The monster smiled, led the fox toward the fire, and murdered it. The gray fox's heart was turned into a beautiful drop of water, clear, monster doctor, I mean daughter hai, हाँ. and pure. Murder किया तभी समझ The गया मैं. monster gave the heart of water to the kitten, telling him, "The foxes have decided. You are the one who must be sacrificed. Take this, quench the flames, and die for your fox kin." The fire was extinguished, but the kitten lived. It left that side of the mountain and found a little bird who had a broken wing. The two promised they would spend their whole lives together, but the little bird did not have long left to live. It passed away soon after. Sanskara. After burying the bird, the kitten left the mountain for good. Never again would it cherish a single creature, nor a single blade of grass that stood on that mountain. The kitten spent the nights wandering aimlessly, ये part gnashing its total teeth at scar the का moon. background है, हाँ ना? How it wished to swallow the moon and devour the moonlight. If the world could only return to darkness, then it would finally be peaceful and content. I will become the new moon, the answer to everything. Then, no one will know that there were once birds, foxes, and cats in this world. अबे ये तो मादारा उचिया की स्टोरी लग रही है बे. Different. We solved it! I remember now. This is not just the balladeer story. It is his very own memories. I made a backup so that it would be preserved no matter what happened. To become a god, he was experimented on and modified countless times. हाँ It was ठीक brutal है. torture, and the only reason he was able to survive is that he was a puppet. This memory was extracted from him by the scholars. Presumably, they kept it to have something to defend themselves with. Infinite Tsukuyomi बनाने वाला था Creating a माँ deity कसम was वो just cat. the first step. Some of them wanted to be able to control it. That's Ouch. why they backed up his memory for later use. I buried it deep inside one of my own dreams, and then hid it inside an allegorical story so that it wouldn't be altered. It's hard to believe that this person really existed, let alone that he tried to get rid of us on more than one occasion. Paimon has no memory of him at all. He completely vanished like a puff of smoke. सारा बोले हम कोई मंदिर का घंटा है The क्या? है ना balladeer माँ agreed कसम. to help me look for information about the descenders, and although he was unsuccessful, he still helped you. Before he vanished, he confirmed an important detail, that Conria was where your twin first came into this world. आ गया यार. We still don't know how the change to Irminsul will affect the senior ranks of the Fatui, but in all likelihood, they won't even remember their own harbinger. It sounds like Paimon wouldn't like this guy a whole lot if he was still around. But still, Paimon doesn't like the way it all ended that much better. हाँ ना? This is why wisdom alone cannot answer all our questions. We look, we see, and we comprehend, but the question still troubles us. So the answer is not everything. People yearn to find the truth and then conquer the troubles they face. When you give someone the truth, you give them a chance to choose their own destiny. To others looking on, this may seem like a pointless endeavor, but for him, the chance to act on his desire to disappear must have meant a lot. Never forget that even when we walk beneath dark clouds along a road filled with suffering, the light of wisdom is always there, guiding us toward a better काश मैं destination. डेंड्रो आर्कन होती. या मेरे पास डेंड्रो आर्कन के That is पावर what रहते. you have been doing all तो समझ में along. आता मैंने एक पपेट को बनाया था जो मेरे से भाग गया, That's right. जिसको मैंने छोड़ दिया. How about we go get something to eat? जोंगली बोलेगा Pick up this heavy Osman conversation the again wine later. tastes the same as I remember, Good idea. but I don't know Paimon, what is Why Baladir. don't you take him out for a walk to clear his वेंटी head? तो भैंस के आगे वेंटी तो पूरा Come on, नशे में Traveler. रहेगा. You need to get out of your head for a
while. You'll feel much better after taking a walk. माँ कसम. Let's go get a snack from one of the stalls in the Grand Bazaar. That'll be sure to lift our spirits. यार ये तो fucked up कर दिया बे. It must be really tough being the only one who remembers all. यार जब भी कभी ऐसा टाइमलाइन वाले ऐसे स्टोरी आते हैं ना, ये इतना fucked up कर देता है ना पूरा. लाइक हमेशा एक इंटरेस्टिंग रहता है, बट फिर भी it fucks so many branches and the parallel things that happen. चलो देखते हैं क्या हो रहा है. पायमान ने वो बोला सब्जी ले. We're here! What should we eat first? Hey, are you gonna answer or what? Alright, whatever you want. Well, Paimon will be right here when you figured stuff out. Then we can get something to eat. What is it? Have you figured? अरे इसको चुप कराओ बे. Yeah, that was it. Greater Lord Rukadevata. She said that no one can erase themselves from existence, not even her. Otherwise, why would she need to create her own reincarnation and lesser not persona to do the deletion for her? There will be no point. Why'd you jump up? No, I can't tell Paimon. She doesn't know about Greater Lord Rukadevata. This is a crucially important detail. It's simply not possible for the paladin to completely erase his own existence. In which case, the question is, what happened? Excuse me, boss. There seems to be a small problem with the last bill. Look, here. भाई ये खुद भी भूल गया क्या मतलब? हाँ बराबर, ये खुद भी भूल जाएगा. Hey! Hey, wait! Hmm? You mean me? No, not you. That kid! Didn't you see? Little rascal grabbed my last 2 fresh Sunsettias and ran off. अरे ये नूबड़ा खुद भी भूल गया. If you're gonna help out here, you can't keep spacing out, okay? Bro, what is it? I feel bad now because or has the big city got too many distractions? ये जो trauma and इसमें सब like जो trauma या जो भी face किया रहेगा ये सब अब भूल गया रहेगा. If I'm not wrong. मतलब ये इसने जो life में face किया है वो सारा इसने change कर दिया. जैसा होने वाला था वैसा हुआ नहीं. But in general सिर्फ अभी नाहिदा and इसको traveler को ही मालूम है कि भाई ये बंदे ने क्या क्या किया. But then इसको animal vision कैसे? I wasn't paying close enough attention. Sorry, boss. I think you're right. Maybe it's the city. It's so exciting. It can be hard to focus. Who's that guy? You know him or something? He's who? You're a strange one, kiddo. You say you don't want any money for helping out here, and then when I actually give you some work to do, you keep letting yourself get distracted. I don't want to take advantage, so I'm happy to pay you what I'd pay anyone else. But if you keep acting like this, pretty soon I won't be able to afford to. No, please. I mean it. You don't need to pay me anything. I'm just so thankful you agreed to take on an outsider like me. You're welcome, I guess. But I got bigger things to worry about. Look, we're all out of Sunsettias. And I promised the lady down the street I'd deliver a fruit bowl this leave it to me. I'll find some more. Stop. I'm gonna level with you, kiddo. I've never met a worker who said they didn't want a wage before. And at first, I got greedy. Couldn't believe my luck. But I figured you'd start asking for something in return eventually. You don't want money. You don't take days off. And in your free time, all I see you do is wander around, taking in the sights. Are you a drifter or something? That's right, I am. We can talk more about that later. First, let me get those fruits you needed.
Sunsetius, was it? Oh. Hey, what do we do now? Okay, stay. ये कर लो पहले फॉलो गेम. Door be like, मैंने wine पी के जाओ bro. This'll do. Even though you say he's the balladeer, what are we planning on doing? Oh, all right. This should be enough. Guess I should wash. Huh? You two over there. Is there something I can help you with? He spotted him. You've been following me all the way from the city. I'd have to be blind not. Have we met before? No, we haven't met. But you know me? I have no recollection. Are you absolutely sure? यार. Sorry, but I just can't take your word for it. A puppet? What makes you think that? Huh? You were right. The look on his face. I guess you do know me after all. That is not something I share with a lot of people. Look, I'm just a wanderer. But seeing as you've gone through all this trouble to track me down, I'm sure... Okay, but please let me deliver these goods to my boss first. Are you really working for that guy? He said you don't want any... Yes, I ran into him out in the wilderness during a storm. And he let me take shelter in his cart. In return, I said I'd be his helper for a while. That's oddly nice of you. Let me take these back. Then I'll come with you. Then let's return to the city. माँ कसम यार ये मतलब मजा चला गया वो बालादीर वाला. जे इसने कांड किए थे ना, वो कांड में एक अलग मजा था. अब वो कांड ही नहीं किया है इसने यार, इसको ही याद नहीं, तो माँ कसम क्या ही मजा आएगा. बैड बॉय से अच्छा बच्चा बन गया, हाँ ना. Here you go, boss. I'll leave them right here. Oh, you really went and picked some more. Who are these two? Something's come up, and they need to borrow me. Sorry, boss. I'm afraid I'll be away from the stall for a while. कल pre-board है. All the best for your pre-board, by the way. Vikramaditya, welcome to stream, man. I was just about to pay you anyway. Go wherever you want, kid. Don't waste your time here. What? I get it, okay? You just wanted to help me out, to thank me for giving you shelter from the rain. आवाज चला गया. But look, it was pouring down, and there you were, sauntering along without a care in the world. Like you had nowhere to be, and didn't even care that it was raining. Imagine you were me for a second. It's a little weird, right? Why is this guy traveling during a rainstorm if he's not trying to get somewhere? Why is he taking a shortcut through the open make sure you like the stream country if you haven't if done he's it. not even in a hurry? But anyway, taking you in didn't put me out even slightly. You don't owe me a thing for it. Certainly not all this. Your time is valuable. You know? But I don't... No. Then I suppose this is where we say goodbye. Thank you again for taking me into the city. Don't mention it, kiddo. I've run into all kinds of characters over the years. Thank you. All right, done. Thanks for waiting for me. Guys, क्या सब मैं हूँ. क्या मालूम. Every item
If you ever want to trade tactics, I'm always ready. Welcome. Get your spicy. आ गया रियाज, आ गई रियाज. आ गई, वो देखा. तो मत बोलो भाई, मैंने क्या बोला. यो हाई कीरा वन सेकंड मैं तुम स्क्रीन. अच्छा, अब थोड़ा समझ में आ रहा है. फिर भी चुमतियागिरी होगी भाई ये स्टोरी में. What's wrong? Huh? Hello. I do apologize for the sudden intrusion. We found this guy in the street, but he doesn't seem to remember anything. So, yeah, quite an eventful walk. सारे अकाउंट्स पे 10 स्टार हो गए फारी. Damn, that's nice. Okay. Bro, समझ गया रियाज. You say that you are trekking across to Vat to train yourself. Many other Inazumans who describe themselves in this way call themselves Shugenja. Why do you refer to yourself as a wanderer? Well, it seems more relevant in my case. To me, it sounds like a plant with no roots. But these two claim that they know me, and that I have a hidden past unknown even to myself. I wouldn't call it the past, but rather... this is a difficult one to explain. I don't like to rely on using terms like this often, but in your case, it seems that it ought... Oh, like a past life or something? Yes, something far more distant than the past. So far away that you cannot perceive it. Wolf single cycle हो गया था. I love Raiden. That's Okay, nice. I have to ask. What was I like in my previous incarnation? Oh, you want to tell me, but you can't bring yourselves to say it. Looks like I didn't have the most wonderful existence in my previous incarnation. If it's that difficult to talk about, I have no doubt it will be just as difficult to hear, but I'll be able to handle it. Please, tell me the truth. Is truth something you care a lot about? Yes. Then I'll be straight with you. In your previous incarnation, you did many things that would be considered evil. You nearly died because of what other people did, and many died because of you. As a non-human being, you hated gods and humans alike. You drifted from place to place, never able to settle, even where you found status and identity. You adamantly believed that you were missing a heart. Actions rooted in persistence sometimes bear bitter fruit. Sometimes, you have to let parts of yourself go, or you'll never be happy. Soja, Naida doesn't wonder about his past. I gave everything I had, but it barely changed history at all. In terms of the outcome alone, that's true. I don't think I can judge everything I've heard purely in terms of right and wrong. Each choice a person makes belongs to a specific place and time. A chain of cause and effect. A cycle of karma and consequence. That is the nature of truth. If one thing is right, its opposite must be wrong. And yet, dichotomies like this are not enough to explain the world in all of its complexity. Seems like my previous incarnation wasn't the most likable individual. We're not trying to hurt your feelings or anything, but... If we were enemies, why are you trying to help me find the truth? This is so frustrating! This guy's supposed to be our arch-enemy, but now he's just some random stranger we met up. He's got so much to answer for, but we can't make him talk because he doesn't remember anything. अरे इसको चुप कराओ यार. Lesser Lord Kusanali,
As the god of wisdom, I trust that everything you told me must be He took true. a nice fall on his head. हाँ ना? Yes, it's all true. I can ये even तो show ऐसा you हो the गया memories कि माँ कसम themselves, ये if सर you're पे गिरा willing. और इसने Please, but I want to see them for timeline myself. change हो गया. I want to experience my own transgressions. Even though it will cause your present self great mental anguish? मैं पागल को Just deep a fry कर puppet. दो. I don't like Wanderer. I love With Scarlet no Witch more. heart हाँ, and no me too, name. me too. कुछ There's मजा नहीं nothing in है this world for me to इसमें. cling to fill the void within me. Except maybe these sins See, that can never be undone. अगर Scaramouche, you know, एक evil से एक अच्छा बंदा बनता ना, ये ट्रांजिशन देखने में अच्छा लगता ना कि completely भाई उसने क्या करते थे कि वो सब भूल गया नूबड़ा. Very well. अब As you wish. Wait, shouldn't we go with him? This one's kind of on us for bringing him here. Don't worry. Whatever danger I might face, it's my burden to bear. Traveler, could I ask you to supervise him on my behalf? Oh, good point. Given your, unique... Understood. Thank you. Now, prepare yourselves, everyone. ए यार ये भाई ये कल करूँगा मैं बहुत थक गया हूँ, सो जाऊँगा मैं. ए नूबड़े क्या किया तूने ये? अरे रास्ते में No matter what lies ahead, अरे रास्ते I'll में face मैं it. गया था. मैंने कुछ Whatever थोड़ी it नहीं takes. करी रे. I'm just sorry that you have to join me for the whole thing. अरे चुप साले, हक दिया है तूने पूरा गंदा वाला. टाइमलाइन की तो माँ है होद दी भाई, एरमेंसल की भी माँ होद दी. क्या बात कर रहा है भाई? It's time to get एरमेंसल की ready. बोला मैं क्या बंदी की घंटा हूँ जाके बचा के जाता है. पहले वो इसके ट्रैवलर की बहन ने किया, अब इसने किया. माँ कसम, too much to handle. But that's it, boys and girls. I hope you guys have enjoyed the stream. Give it a big thumbs up and subscribe. मैं होद दी बोल दे हो की जगह जा रहे दो जो भी हो. But that's it. Thank you so much guys for watching the stream. I hope you guys have enjoyed it. Give it a big thumbs up and subscribe my channel for more streams and for more videos. I'll see you guys tomorrow with another live stream of Genshin Impact. All the best to all the people who are giving boards. And yeah. If you ever want to trade tactics, I'm always ready. Yeah, if you wanna ever trade tactic, we are always ready for any exam situation tips. So yeah, that's it. Bye bye. Have a nice day. Stay safe, stay fired up, and please roll the outro. And good night.